आज इस 53rd बुधवार की थेरेपिस्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज स्पाइनल नर्व पे डॉक्टर केतान साहब लेक्चर लेने वाले हैं और आदरणीय अग्रवाल सर जो कुछ भी नया रिसर्च चल रहा है, नए प्रोटोकॉल चल रहे हैं, उस पे जो आप पिछले कई बुधवार से पढ़ रहे हैं यौगिक एलार्म चक्रा, तो उसी के क्रम में नए प्रोटोकॉल्स आज आपको बताए जाएंगे। तो क्लास प्रारंभ हो इसके पूर्व हम चलते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के हेडक्वार्टर, जहां से ओमकार और प्रार्थना आयोजित होगी। पहले हम 3 बार ओम शब्द का पारायण करेंगे, उसके बाद हम अपनी स्पाइन को सीधी करके संस्थान की प्रार्थना को शुरू करेंगे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। हम दीन दुखी बलो बिकलो के सेवक बन संताप हरे। जो है बिछुड़े भूले भटके, उनको तारी खुद तरी जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निस दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। निज आने मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावे। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावे। वह शक्ति हमें दो दयालु दे। बहुत बहुत धन्यवाद रीता पांडे और अंशु जी प्रार्थना के लिए। पिछले दिनों ब्रेन पर आधारित वर्कशॉप आयोजित हुई 2 दिन की, 26 और 27 फरवरी को, जो बहुत महत्वपूर्ण थी। आप में से काफी लोगों ने वह क्लास अटेंड की थी और उसके बाद पहली बार इस बार आदरणीय अग्रवाल सर ने
क्वेरी और इंटरेक्शन सेशन उसके नेक्स्ट डे यानी 28 फरवरी को शाम को 5 से करीब 7:15 बजे तक आपके जो भी उससे संबंधित सवाल थे उनका जवाब दिया, जिससे जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको उन सवालों का, उनके क्वेश्चंस का वो भी जवाब मिला। और बेसिक ट्रेनिंग 5 और 6 मार्च को आयुर्वेद पर आधारित होने जा रही है। तो इस एक्यूप्रेशर विधा को घर घर तक पहुंचाने के लिए आप माध्यम बन सकते हैं और कम से कम 1 लोगों को इस बेसिक ट्रेनिंग से जोड़ें और जिससे प्रत्येक घर में ये एक्यूप्रेशर विधा पहुंचे। तो आइए हम आमंत्रित करते हैं हमारे संस्थान के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज के क्लास के लिए। धन्यवाद प्रोफेसर आनंद सिंह जी। Am I audible? जी, you are audible, sir. Visible and screen is being shared? Yes, sir, both. रीता पांडे जी और अंशु अग्रवाल जी को संस्थान की प्रार्थना के लिए धन्यवाद और उनका आभार। मित्रों, इस नेशनल चैनल पे आपका मुझे हार्दिक स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है और साथ ही आपका मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि आप अपने बहुमूल्य वक्त में से संस्थान के कार्य के लिए सदैव खड़े रहते हैं। और इस कार्यशाला में प्रवेश करने से पहले परम शक्ति और आदरणीय खेमका जी को नमन करते हुए, जो कि हमारे अजस्र प्रेरणा स्रोत हैं। मित्रों, नवीनतम शोध यौगिक अलार्म चक्रों के बारे में है और उसका स्टेटस डायग्नोसिस से लेकर ट्रीटमेंट तक के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हम आपके सामने कुछ कुछ चक्रों के, जो कि जिनका नाम हम लोगों ने हमारे रिसर्च विंग ने यौगिक अलार्म चक्र रखा है। और ये अलार्म का मतलब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट आपने कुछ पिछले वर्षे से देखा कि गैस्ट्रो चक्र पे आपने अपना फीडबैक दिया, ट्रीटमेंट दिया और वो अनेक प्रकार से उपचार और ट्रीटमेंट के लिए और डायग्नोसिस के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है। ये हम आपको सेंट्रल न्यूरो चक्रा के नाम से GB 41.5, जिसका लोकेशन डॉक्टर वॉल के अनुसार है, लेकिन ये पहले कभी भी टैप नहीं हुआ था। ये 41.5 पे बीच का पॉइंट है, जो लाल रंग की डॉट आप देख रहे हैं, मेरा ये कर्सर है। इस पॉइंट पर आप यानी टो नंबर यहां से लेके चलेंगे और इस मेटाटार्सल बोन के बीचों बीच जब आप टच करेंगे तो आपको यदि पेनफुल और जितना सेंसिटिव होगा उतना ही महत्वपूर्ण और इसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी। इसी तरीके से एक छोटा सा फीडबैक के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। ये टो नंबर 8 है और इसमें डॉक्टर वॉल की स्किन डिजेनरेशन मेरिडियन है और यहाँ पर स्किन डिजेनरेशन का 2.5 ये पॉइंट है और ये है फाइब्रॉइड डिजेनरेशन, जिसको हम अभी अलग से डिफाइन करेंगे, लेकिन हम इसका फीडबैक आपको स्किन डिजेनरेशन 2.5 के रूप में हम दे रहे हैं। और ये इसकी लोकेशन आप देख लें, ये है लोकेशन। अनिल जी, इज इट विजिबल? यस सर, इट इज विजिबल। मित्रों, इसका फीडबैक मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूं कि हमारे ऑफलाइन ट्रीटमेंट में एक पेशेंट, बच्चा मुश्किल से 3 साल का होगा, 2.5-3 साल का, अगर उसकी हालत देखें तो आप सोच नहीं सकते
कि रात दिन खुजाता यानी किसी तरह नींद आती है, लेकिन बाकी समय उसको खुजली करते करते पूरे चेहरे पे नाखून के निशान थे। और माँ बाप की हालत आप समझ सकते हैं कि क्या रही होगी जब बच्चे की स्थिति ऐसी हो। तो ऐसी दशा में उस बच्चे को ट्रीटमेंट पिछले 3 सिटिंग में जो एस्टेब्लिश प्रोटोकॉल है उनमें दिया गया था, और वो ट्रीटमेंट कुछ इस प्रकार था कि जिस तरीके से हम लोग स्किन डिजीज की देते हैं, बहुत स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के 3-4 LHM में 2-3 सेडेट 1-4 जो कि 75% मामले में हम लोग पहले यही देते रहे, और लेकिन इन उपचार से कोई फायदा नहीं। थोड़ा बहुत फायदा था क्योंकि होम्योपैथी से लेके एलोपैथी सारे पैथी का इस्तेमाल करने के पश्चात भी जो लाभ नहीं मिला, तो ऐसी दशा में हमने ये एसके डीजनरेशन स्किन का 2.5 ये ट्रीटमेंट दिया था, और सेडेशन का था। दोनों तरफ केवल बस एक बेओल मैग्रेन BM2 जिसको चक्र के रूप में प्रयोग किया गया, और नेक्स्ट डे पे जो है पेशेंट के ओर से बताया गया कि इतना लाभ तो कल्पना भी नहीं की गई थी। तो मेरा आपसे इसको शेयर करने का आशय यही है कि हम लोग हमारी रिसर्च ने इस स्किन डीजनरेशन को किस तरीके से डिफाइन किया है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। आज आइए हम एक ऐसे अद्भुत चक्र के बारे में आपको बताते हैं जो गॉल ब्लैडर के है, और इसे हम न्यूरो यानी सेंट्रल न्यूरो चक्र, सेंस ऑर्गन जो हमारे सिर में हेड में आईज, नोज और ईयर, और ये टेस्ट के लिए जो है टंग है और वॉइस बॉक्स, इन सब का जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर वॉल ने गॉल ब्लैडर के मेरिडियन पे बताया गया था, उसे हमने CME नियम से लेके सारी जगह तक अनेक तरीके से गॉल ब्लैडर के उपयोग किए थे और उस मेरिडियन का। लेकिन इस सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट ने किस किस चीज के लिए आप उपयोग कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोगों ने जिन्होंने ब्रेन की का वर्कशॉप इस में पार्टिसिपेट किया था, वो जानते हैं कि इसमें कहाँ से किस किस चीजों के लिए हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और ये ट्रीटमेंट आपको देखें कि सबसे बड़ा जो है साइकी डिसऑर्डर्स, मेंटल हेल्थ, जब हमें किन्हीं कारणों से हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाए और लंबे समय तक नींद आना बंद हो जाए, तो उसके साथ साथ भूख प्यास ये सारी चीजें बंद होने लगती हैं। और इसकी अगर आप कोई जांच कराना चाहेंगे तो CT और MRI में इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस, लीजन आदि नहीं मिलेगा। लेकिन पेशेंट की हालत, मेंटल स्टेटस जो कि स्लीप डिसऑर्डर से शुरू हुआ और बाद में उलझन, बेचैनी, टेंशन, एंजाइटी, OCD और ऑब्स्ट्रक्टिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से लेके लंबे समय तक की प्रॉब्लम्स मैनिफेस्ट हो जाती हैं और अनेक प्रकार के फोबियाज। तो ऐसी प्रॉब्लम को जहां पर कोई एक विचार नेगेटिव अगर खास तौर से जम जाता है तो उससे हटना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अनेक प्रकार के फोबियाज और इमोशनल प्रॉब्लम्स को लेके पेशेंट, तो ये सारी चीजें, थॉट प्रोसेस जब बाधित होने लग जाए, हर प्रकार की एलर्जीज, मेंटल और फिजिकल, आपको एलर्जी हम डिफाइन करना शुरू कर देंगे तो सैकड़ों तरीके के हैं। यहाँ तक कि फूड आर्टिकल्स की ही एलर्जी तो जब डॉक्टर के यहाँ चेक कराते हैं तो सैकड़ों तरीके की एलर्जी आपके सामने
तो उन सब का भी इलाज, अगर किसी प्रकार की ऐसी एलर्जी, मेंटल और फिजिकल दोनों तरीके के, उसके लिए जीबी इस अलार्म चक्र का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ आप देखें कि उलझन, बेचैनी, खासतौर से खाना खाने के बाद 3 घंटे बाद, और बच्चों के मेंटल स्टेटस, जो बच्चे सीपी चाइल्ड होते हैं उनका डिलेड माइलस्टोन हो, या हाइपर एक्टिविटी, या बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ गुस्सैल प्रवृत्ति का हो, या ट्रेमर्स आते हों, पार्किंसन डिजीज, आप देखें कि सीजर्स, झटके लगना, बहुत ज्यादा डकारे आना, नौजिया और उल्टी, वोमिटिंग, चेस्ट स्नीजिंग की, स्क्वीजिंग की, जैसे छाती में कोई जकड़े हुए, ज्यादा आंखों का फड़कना, यानी, और ट्रेमर्स, गैस्ट्राइटिस, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स जितने हैं, स्पैज्म की झटके आना, मस्कुलर स्पैज्म हो, या चेस्ट में स्पेस्टिक चेस्ट हो, या स्टमक, और इसे कह सकते हैं कि एक तरीके से पेट में गैस्ट्रिक अटैक के साथ साथ बर्पिंग के साथ, जब ऐसी कंडीशंस होने लगती हैं जैसे आपके डायफ्राम के नीचे कोई झटके आ रहे हैं और चेस्ट में पेन के साथ जो है उलझन, बेचैनी, तो गैस्ट्रिक ऐसी कंडीशन में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम के साथ साथ उलझन, बेचैनी, यानी न्यूरो इन्वॉल्वमेंट, चाहे वो वेगस नर्व का हो, चाहे स्पाइनल नर्व। आज का विषय जो अभी थोड़ी देर में क्लास लेने वाले हैं डॉक्टर खेतान साहब, उनका विषय स्पाइनल नर्व है, क्योंकि ये भी हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी, और हम लोगों का ये उद्देश्य है कि जितने ऐसे सेलिब्रिटीज हो, ब्रेन या नर्वस सिस्टम या ब्रेन के हेल्थ के बारे में जितनी हम जानकारी ले सकें, क्योंकि एक्यूथेरेपी ही एक ऐसी थेरेपी है जिसका सबसे अधिक दोहन कनेक्टिविटी ऑफ ऑर्गन की फंक्शंस के लिए न्यूरोपैथी को, न्यूरोलॉजी को, इस विज्ञान को, नर्व के एक एक छोटे से छोटे ज्ञान को किस प्रकार से स्पाइन की स्पाइनल नर्व हुआ या ब्रेन की नर्व से हम आंख, नाक, कान से लेके हार्ट और लंग्स आदि जितने भी एंटीरियर ऑर्गन्स हैं उनका उपचार करने में सक्षम है, जबकि अन्य थेरेपी में ऐसा नहीं है। तो मित्रों, मैं इसी दशा में आज जो स्पाइनल नर्व का है वो लेकिन ये जो हम यौगिक अलार्म चक्र है, इसका भी संबंध ब्रेन और स्पाइनल नर्व से सीधे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्यूथेरेपी में टीसीएम के अनुसार चाइनीज मेरिडियन में ब्रेन में सबसे ज्यादा अगर कोई जिसका प्रभाव है तो गॉलब्लैडर का, उसके बाद यूबी का, ट्रिपल वार्मर का, और चौथा है स्टमक की मेरिडियन बहुत ज्यादा प्रभाव कर देती है। इसलिए हम ऑटिज्म के बारे में भी आपको कुछ प्रोटोकॉल बताएंगे कि इन्हीं मेरिडियन के माध्यम से, चाहे वो सीएमई में हो या टीसीएम की डायरेक्ट मेरिडियन हो या आयुर्वेदिक की, लेकिन विजन एक विजन है। फिजियोलॉजी एनाटॉमी मिलाकर सारे चार एक ही बात करती है। तो हम उस पर आने से पहले इस जीबी, जो कि ब्रेन के अथाह सागर जैसे प्रभाव क्षेत्र में, ब्रह्म क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, और जीबी के इस पॉइंट से यौगिक अलार्म एक सिंगल पॉइंट से अब बहुत सी चीजों को, मित्रों, यदि नींद का अगर आपको इश्यू है तो आप उस पे दोनों तरफ पिंक कलर लगा के भी और बहुत सी चीजें पैरासिम्पैथेटिक यानी ब्रेन को काम डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जब तक ब्रेन में कोई ना कोई चीजें चलती है, रेसिंग ऑफ थॉट्स है, या आपको किसी प्रकार की एंजाइटी है, टेंशन है, और या किसी से एक
ऐसा विवाद हो जाता है, इमोशनल 36 का आंकड़ा है कि बार बार घूम घूम के वही बातें आ रही हैं। तो ऐसी दशा में काम डाउन करने के लिए या तो हम सिलेक्ट करें इस चक्र को, या इस पे जो कि एक तरीके से देखा जाए टोनिफिकेशन, सिलेशन या कलर का जो है सबसे स्ट्रॉन्ग क्या, एलिवेटेड ट्रीटमेंट। क्योंकि टोनिफिकेशन सिडेशन में तो सिर्फ दो ही बात होगी कि वहां की एनर्जी को या तो बढ़ाया जाए या घटाया जाए, लेकिन 10 ओरिजिन में डिफरेंट कलर लगा के हम उसमें अनेक प्रकार के प्रभाव देख सकते हैं। आपको शायद ये लगता होगा कि कलर का इम्पैक्ट डालेगा, लेकिन आप कलर थेरेपी से देख चुके हैं कि छोटा उपचार लेकिन बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है। लेकिन एडवांसमेंट ट्रीटमेंट का नहीं है, रोग का नहीं है, बल्कि आपके विजन का है। तो मित्रों, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, इरिटेशन। जब हमारा जीरो टॉलरेंस होता है, किसी बात को का धैर्य नहीं होता, इम्पेशेंट हो जाते हैं, तो हमें बहुत दिक्कतें सामना करनी पड़ती है। अनेक प्रकार के विवादों को जन्म हो जाता है और हम अपने इम्पेशेंस के कारण, जीरो टॉलरेंस के कारण कभी कभी अच्छी चीजों के प्रति भी अपनी टॉलरेंस इनटॉलरेंस में बदल लेते हैं बिना सोचे समझे, तो उसे जो कि बीमारी का रूप धारण कर लेता है। अदरवाइज और एग्रेशन आपको डायनेमिक होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जो अपने को इंजर करे या सामने वाले को इंजरी करे तो वो बीमारी का रूप धारण कर लेता है। और अनयूजुअल बिहेवियर या ब्रेन के जैसे फंक्शंस होते हैं कि जब हमारा यूरिन या बच्चे का या किसी को जिसको हम पेशेंट के रूप में जानते हैं, अगर ऐसी दशा में अनकंट्रोल्ड यूरिन से लेके अनकंट्रोल्ड स्टूल और अनकंट्रोल्ड एनी एक्टिविटी ऑफ बॉडी, यहाँ तक कि अर्थराइटिस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। आपको गैस्ट्रो चक्रा के बारे में हम बता चुके हैं और आप इसके आपने बहुत अनेक प्रकार के फायदे देखे भी होंगे। अब नेक्स्ट हम लोग जो है एक मेटाबॉलिक फौलादी चक्र, इसको भी हम आपके सामने रख चुके हैं और इसका एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा कि अगर किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा ठंड लग रही है और किसी भी तरीके से कहीं कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो एक खास तौर की रेपेटरी कलर के माध्यम से कि हमारी बॉडी का इनबिल्ट मैकेनिज्म जो कि हमारा एनर्जी सिस्टम है और उसका सबसे बड़ा उसका प्रभाव डालने वाला है ब्लड, जो कि हमारा टिश्यू प्लाज्मा के बाद ब्लड का स्थान होता है और कनेक्टिव टिश्यू है पूरे। इसका ग्लोबल प्रेजेंस है ह्यूमन बॉडी में। ग्लोबल का मतलब चारों तरफ, इसलिए अगर ब्लड की वार्मअप होती है तो सारे शरीर में चैतन्यता भी अच्छी होती है और सारे जितने भी टिश्यू के फॉर्मेशन आदि महत्वपूर्ण होते हैं। और किसी तरह उसका लेवल, अगर टेम्परेचर जो होना चाहिए ब्लड का, अगर वो कहीं कम है तो ठंड इंटरनल इस तरीके से लगेगी कि कोई भी आपको बाहरी तापमान बढ़ाने के स्रोत यानी हीटर आदि ही बड़ी मुश्किल से आपको कर पाएंगे, लेकिन जैसे ही बंद होगा फिर आपको ठंड लगेगी। या इसलिए आपको ऐसा कोई पॉइंट चाहिए जो पूरे बॉडी को की एनर्जी सिस्टम में वार्मअप प्रोवाइड कर सके, वो है मेटाबॉलिक चक्र। और लीवर पॉइंट, लीवर के 2.5 पे इस पॉइंट पर लाइट ब्लू कलर यानी ब्लड में इस पॉइंट को, जो कि चाइनीज आयुर्वेदिक एंगल से ये एक तरीके से फायर एनर्जी, अग्नि और जो कि टेम्परेचर
पूरे एनर्जी और पूरे बॉडी का इनबिल्ट मैकेनिज्म के टेम्परेचर को रेज करने के लिए, और इसे पित्त से संबंधित माना गया है। अग्नि बहुत महाभूत और तो ऐसी दशा में इस पॉइंट पर लगाने से बहुत बड़ा आपको फायदा हो जाता है। और इसी तरीके से चाइनीज एनर्जी पैटर्न में अगर आपको लीवर हीट है तो जिसके कारण आपको उलझन बेचैनी से लेके इंडाइजेशन से लेके बहुत से ऐसे कारण उत्पन्न होते हैं जो आपको परेशान करते रहते हैं, सोरियासिस से लेके अनेक। क्योंकि ब्लड के अंदर जब हीट बढ़ती है तो यहाँ पर आयुर्वेदिक यौगिक कैलान चक्र के दृष्टिकोण से ये ब्लड की हीट को भी कंट्रोल करता है, क्योंकि इट बिलोंग्स टू फायर एलिमेंट। और इसकी प्रमुख उद्देश्य जो है पूरे शरीर के टेम्परेचर का नियंत्रण है। इसलिए यहाँ पर ग्रीन कलर अगर हम लगाते हैं तो लीवर की हीट, ब्लड की हीट पे काफी कुछ, अदरवाइज ये इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए इसमें ये दिया भी हुआ है कि अगर सर्दियों में, क्योंकि हमारी अंदर की हीट जो है वो कम हो जाती है विभिन्न कारणों से, या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को ठंडा पड़ जाने के कारण, अग्नि मंद पड़ जाने के कारण सारी चीज वोमिटिंग टेंडेंसी होने लगती है, जैसे कहते हैं कि अंदर से ठंड लग गई और खाने का मन नहीं करता, रुचि हो जाती है। तो ऐसे में लाइट ब्लू कलर इम्पोर्टेंट है, और उसके विपरीत गर्मियों में ग्रीन कलर। इंडिकेशंस आपको हमने पहले भी काफी बताए हैं। अब आइए इम्यूनिटी चक्र। इम्यूनिटी चक्र का मतलब है कि हमारे शरीर की रेटिक्यूलो एंडोथेलियल सिस्टम का ये प्रतिबिंब बिंदु है, यानी पूरे शरीर की सुरक्षा। और आप जानते हैं कि कोविड की महामारी, कोविड के इन्फेक्शन के कारण चारों तरफ हाहाकार था कि जिनकी इम्यूनिटी बेहतर है, और भारतवर्ष में हमारे खान पान और काढ़े आदि के प्रयोग से इम्यूनिटी के इम्प्रूवमेंट का जो देखा गया है वो अन्यत्र कहीं नहीं पाया गया। और ऐसी इम्यूनिटी जो कि हमारी सुरक्षा तंत्र, हमारी शरीर को सुरक्षा और अलग अलग ऑर्गन को सुरक्षा प्रदान करता है, उसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये SP3.5, जो कि लेफ्ट साइड में डॉक्टर वॉल ने ब्लड के न्यूट्रोफिल यानी पॉलीमार्फ, लिम्फोसाइट, एस्नोफिल, बेसोफिल और मोनोसाइट के कुछ पॉइंट्स के रूप में बताए थे। और ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के लिए WEC के माध्यम से अत्यंत इम्पोर्टेंट है। इस पर ब्लैक कलर देकर हम बहुत सी समस्याओं का हल कर सकते हैं। और इसमें नाभि के क्षेत्र में जो आप देखते हैं कि हर्निया हो जाता है, जिसे आप अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं, इसको भी हम सिलेक्ट करके चक्र मैग्नेट से, चक्र क्या BM3 चक्र तो बड़ी होगी, BM3 या BM4 से कर सकते हैं। और जहां जितना जिसका स्पेस है उसी हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। प्रत्येक प्रकार की इन्फेक्शियस डिजीज के लिए काला कलर लगा के हम काफी कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि स्प्लीन का, एक तो कंजेस्टिव स्प्लीन जो कि एनर्जी पैटर्न्स के बारे में जानते हैं, और जब WEC के अफेक्टेड होने के कारण एनीमिया हो जाता है, हीमोग्लोबिन गिरने लगता है इन्फेक्शन के कारण, और धीरे धीरे वो पॉलीसीथीमिया और मेजर और माइनर आपको ऐसी कंडीशन में स्प्लीन की वृद्धि हो जाती है, एनीमिक हो जाता है, पॉलीसीथीमिया, वीकनेस आदि अनेक सिम्टम्स हैं। और स्प्लीन की वेन्स का ब्लॉकेज भी यहीं से, और स्प्लीन में अगर कोई किसी प्रकार का डैमेज हो जाए, इंजरी हो जाए, तो जिसके कारण एनीमिया हो जाता है, ब्लड का बनना, और खास तौर से RBC
प्लेटलेट और आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का इम्बैलेंस होने लगता है इसी दशा में, इस इम्यून सिस्टम के चक्र का। ये आपको लगेगा कि एक सिंगल पॉइंट से ऐसा कैसे हो सकता है, आप इसे करके देखेंगे। लूज स्टूल हो रहा है तो उस पर येलो कलर लगा देंगे और आपको डायरिया और लूज स्टूल के लिए, और हेमराइड्स यानी मस्से पाइल्स के हैं तो उसे सेडेशन बाई BM3 से आपको लाभ मिल सकता है। गैस्ट्रिक और फ्लैटुलेंस जो है, जिस प्रकार से स्टमक और स्प्लीन का बहुत बड़ा रोल है और इन और यांग ऑर्गन के माध्यम से, और चाइनीज सिस्टम, ये इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और अनेक प्रकार के प्रोलैप्सेस हैं, इरेगुलर पीरियड है, एनएस का प्रोलैप्स है यानी मलद्वार बच्चों की सरक जाती है नीचे। महिलाओं में यूट्राइन प्रोलैप्स है और पेट आगे की तरफ थुलथुला स्थूल थुलथुल नजर आता है ऐसी दशा में। पाइल्स है, वेरिकोज वेन्स है, हर्निया है, हैवीनेस टीपी गैस्ट्रियम में है, तो इसमें स्प्लीन 3.5, ये लेफ्ट साइड में। अब उसी का काउंटर पार्ट डॉक्टर वॉल का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है कि उन्होंने स्प्लीन और पैंक्रियास की मेरिडियन को लेफ्ट राइट में, जो स्प्लीन की मेरिडियन चाइनीज है उसमें अनेक पॉइंट जोड़कर लेफ्ट में स्प्लीन को, और उसी मेरिडियन में जिसे पैंक्रियास का नाम दिया गया, और यहाँ पर पैंक्रियास के कुछ ऐसे पॉइंट हैं, अद्भुत पॉइंट हैं, जो कि ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से और हमारे यौगिक अलार्म चक्र में इसको हमने संज्ञा दी है 3.5। और ये राइट साइड का आप देख रहे होंगे, ये न्यूट्रिशन चक्र है। न्यूट्रिशन का मतलब हमारे शरीर को पोषण कहाँ से मिलेगा। सभी जानते हैं कि पोषण टिश्यू से मिलता है। आप सब ये भी जानते हैं कि हमारे भोजन से हमारे शरीर को पोषण मिलना का मतलब आंख नाक को अगर हमें खाद पानी नहीं मिलेगी, न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, तो आंख कान नाक हो या हमारे स्वयं हार्ट जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है ब्लड के माध्यम से, उसे भी भोजन के माध्यम से, उसका भी एक अपना भोजन है। और ये सिलसिला शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग से लेके सेल तक को, सेल की भूख का शमन करने के लिए ये न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करता है, यहाँ तक कि ब्रेन के प्रत्येक पार्ट को। तो इसका रोल, अगर आप हेल्दी ब्रेन चाहते हैं, मेंटल स्टेटस अच्छा हो, आपके शरीर में स्वस्थ हो, शरीर के प्रत्येक ऑर्गन अच्छी तरह काम करते रहे, इन सब के लिए ये आवश्यक है कि न्यूट्रिशन चक्र जो PN 3.5। अब आप देखिए सर, डॉक्टर खेतान सर जुड़ गए हैं। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जब भी हमें मौका मिलेगा इसे कंप्लीट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इंतजार रहता है डॉक्टर खेतान साहब का, इसलिए ओवर टू अनिल सिंह जी फॉर ऑनवर्ड लेक्चर बाई खेतान सर, जिन्होंने हमारी प्रत्येक भावनाओं का, हमारी आवश्यकताओं का आदर करते हुए आज एक महत्वपूर्ण विषय को स्पाइनल नर्व के रूप में ले रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और विशेष रूप से ओवर टू प्रोफेसर अनिल सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपके इस इम्पोर्टेंट नॉलेज के लिए जो सबको मिला। अभी डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब हमारे बीच मौजूद हैं और आपको आमंत्रित करते हैं। आज विशेष विषय स्पाइनल नर्व का, उस पर डॉक्टर प्रकाश खेतान साहब लेक्चर लेने जा रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनें। अनिल जी। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही? हाँ, वीडियो ओपन नहीं है सर। May I request Professor Ram Kumar Sharma to share my slides on screen, if it is possible?
since I'm outside, I'm not there in Allahabad. You just share the slides. Today, thank you. We are going to start our lecture, Anilji. Thank you. It is already delayed. Therefore, I'm not taking so much time. Now we are discussing a very important topic, a spinal cord. Rather, I will say that it is a communication between brain and body. If you divide, are you getting my point? Hello, are you getting? Anilji? Anilji? हाँ सर, से सर। Hello. हाँ सर, स्क्रीन शेयर हो रही है सर। हाँ, screen sir, I am visualizing screen. Are you getting my voice? जी जी, you are audible sir. हाँ. A spinal cord is a very important topic. It is basically connecting your body. Just imagine your brain and body is separately placed at anywhere. Your body is placed in one room and your brain is placed in one room. Then it requires a connection like a switch and tube light. You know, there is tube light and there is a switch. Both are usually placed at a separate place. It is united by some connections by wires, connections of networks. Similarly, brain and body is connected with the wires like switch and tube light. It is a connection between brain and body, but it is different from switch and light. Switch is a one-way communication, while a spinal cord is a two-way communication. How wonderful it is developed, can you imagine? It also gives a sensory stimulus. It also gives a motor stimulus, while a switch and tube light gives only a motor response. You are just doing on and off of switch, and similarly the result happens on the tube light. But here the result is different. Here the spinal cord with its dense network and connection, it is a completely different thing. It also gives sensory impulse, when to stop the switch, when to slow the switch, and when to increase the intensity of the switch. Accordingly, the other motor response of the body. Therefore, it is a very important connection. It is a two-way communication. It is a two-way communication between brain and body. You cannot imagine our brain without the existence of a spinal cord. Therefore, it is rightly said, it is the most important structure in the body, and therefore we are not able to transplant brain yet now. It is a thread-like structure. If you see, it is one of the 36 centimeter structure. There are three structures in the body which is 36 centimeter. One is a spinal cord, one is femur, and other is your spermatic cord. These are the 36 centimeter structure in the body. You also know about the brain stem. Brain stem means midbrain, pons, and medulla. Where medulla ends, that is the beginning point of the spinal cord. Can you imagine the embryonic life of the spinal cord? आप सोचिए, आपका बच्चा गर्भ में पल रहा है और उस पूरे बच्चे को पलना है,
पलना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि छठे हफ्ते में हार्ट बीट आ जाती है बच्चे के अंदर, माँ के गर्भ में हार्ट बीट आ जाती है। Only on the 6th week, and by the virtue of so many lectures taken by an innovative approach and so many previous lecture, I would like to emphasize on the fetal tissue. It must be included in our acupressure. The pregnant mother, the womb, the developing child in the womb, in uterus. You cannot appreciate the problem of the सर आपका आप we see lots of cases of marasmus, kwashiorkor, nutritional deficiency, iron deficiency anemia, and other problems. Now we have to focus on that also. I would like to request all the research fellow, all the innovative students, kindly do on perinatology or the study of fetal science with the help of your holistic or your different medicine, that is a acupressure medicine. Now I am going to start. Why I am giving so much emphasis on the fetus? Because at the beginning of the 3rd month in first trimester, the spinal cord get developed in its full length. Can you imagine? It get developed in full length. The body is not developed, but the spinal cord is developed. If it is not developed, then how can we get a coordination between brain and other part of the body? Therefore, logically and scientifically, it is developed earlier in the fetal life also. And therefore, at the end of the lecture, I will say what is the ascent of a spinal cord in the adult life, what is the tethered cord syndrome, what is the split cord malformation, what is the descent of a spinal cord, why is the level of a spinal cord is below the L3 vertebra or up to the L5 vertebra in the fetus, and gradually in adult it ascend up to L1 or L2. This is the cause, because it developed earlier. It has to communicate between all the parts of the body. It has to synchronize the impulses made in the brain of fetus or brain of the mother through the placenta to all the parts of the body. Therefore, it is developed early in the 3rd month of the first trimester. It is very important that it is developed earlier. Now I am coming on my first slide. A spinal cord is the most important structure between body and brain. As I told you, the spinal cord extends from foramen magnum. Foramen magnum is a portion from where all the ascending and descending tract came out. It is it is a junction of just above the axis, atlas vertebra, axis, the part of the odontoid process, the first cervical vertebra and occiput. Here we makes a foramen of magnum. The spinal cord extends from the foramen magnum. It just start where the medulla oblongata ends, where it is continuous with the medulla to the level of the first or second lumbar vertebra in adult. Just you have to add this point in the adult. As I have told, it is a vital link between brain and body, and from the body to brain, it is a two-way communication. It is a two-way communication. The spinal cord is 40 to 50 centimeter. It is in different book, different things is written, but since the height of the patient is different, but is what we takes from Harrison CMDT, that is a standard book, it is a 36 centimeter long structure. The diameter is 1.5 centimeter.
Can you imagine a thread? आप रस्सा कस्सी खेलते हो, रस्सा कस्सी में जो थ्रेड होता है, थ्रेड की आप चौड़ाई देख लो कितनी है। आप तार के गुच्छे देख लो, कभी रिलायंस वाले तार बिछाते हैं अंडरग्राउंड करके सबके घर के सामने। आप उस तार की परिकल्पना कर लो जो इंटरनेट का तार बिछाते हैं, वो कितना मोटा होता है। कभी लाल रंग का तार बिछाते हैं, कभी काले रंग का तार बिछाते हैं, फिर नेट से आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं। ये एक ऐसा ऑर्गन जो आपके ब्रेन को बॉडी से जोड़ता है, वो मात्र 1.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है। कैन यू इमेजिन इट? मात्र 1.5 सेंटीमीटर। It is amazing, really, it is amazing. Two consecutive row of nerves join distally to form 31 pairs of the spinal cord. You just mind it. Spinal nerves are 31 pairs, while the vertebra are more. The logic behind it I have already told you, that it developed embryologically, it is developed very fast in the first trimester, earlier weeks of third month. A spinal cord is a cylindrical structure of the nervous tissue composed of white and gray matter, both white and gray matter incorporated, and it came in the same way as our cerebral tissue is made, uniformly organized and divided into 4 regions. As you know, हम लोग बोलते हैं धड़, गर्दन, धड़, फिर हम लोग लंबर रीजन बोलते हैं, फिर हम अपने पूंछ का रीजन बोलते हैं। शरीर में 4 भाग होते हैं। अगर भाग आप करें, आप अपनी गर्दन को घुमाइए, गर्दन देखते हैं हम थोड़ा लेक्चर ले रहा था मैं। गर्दन, अपने शरीर में 4 पार्ट होते हैं। गर्दन, हमारा थोरेसिक, लंबर रीजन और फाइनली सैक्रल, जो हम सैक्रल और कॉसिक्स भी होता है अपना। कॉसिक्स चूंकि हमारे यहाँ रूडिमेंट्री होता है, ये जिनमें पूंछ होता है, हमारे जो पूर्वज थे मैमल्स के, उनमें ये सब चीजें थी, लेकिन हमारे यहाँ ये सब चीजें रूडिमेंट्री हो गई। तो सर्वाइकल, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर एंड सैक्रल। And there is a interesting mathematics to calculate the level of a spinal cord, to know the dermatome of our nerves. Although the spinal cord, the first cervical, thoracic, third lumbar, and fourth is sacral. Although the spinal cord constitutes only 2% of the cellular nervous system. Are you appreciating how amazing it? People are saying only seven wonders of the world that are non-living wonders of the world. We have not focused on the living wonders of the world. It is one of the living wonders of the world, a spinal cord. You have not discussed about the Taj Mahal, Great Wall of China. These are non-living things. We have yet not discussed about the amazing living things, which makes us to visualize non-living things, which makes us to name the 7 wonders of the world. It is the most important wonder of the world, living wonder of the world, that is a spinal cord. It constitutes only about 2% of the central nervous system. Its functions are vital. Knowledge of a spinal cord function anatomy makes it possible to diagnose the nature and location of the lesion and many cord disease. It is one of the most important lecture for all of you. You can diagnose without the help of any CT scan, any X-ray, or any MRI. You can diagnose where is the lesion, what is the dermatome, and what is the nature of the lesion, whether it is extradural, whether it is intradural, whether it is involving ganglion, whether it is involving peripheral nerve. You can diagnose it. I am very surprised here. I am at Bangalore airport.
I'm along with your auspicious student. She came here at airport. Just listen to her. मैडम बात करिए आप बताइए जी आप अपने बारे में बताइए मैं मतलब इलाहाबाद से हूँ एसपस से प्रेमलता 6 सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ और सर का क्लास में हम रेगुलर अटेंड वेडनेसडे की क्लास होती है आपकी और इतना अच्छा मतलब रिजल्ट आया है उसका इतना अच्छा लेक्चर है आपका कि मतलब सब लोग सुनने को तैयार होते हैं रेगुलर में हम लोग सुनते हैं और रेगुलर क्लास होता है और एक एक हर चीज का बहुत ही मतलब बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं सर बहुत ही क्लियर कट और बहुत ही बढ़िया से हर चीज को मतलब बाहर के भी लोग रहते हैं हम लोग तो रहते ही हैं ऑल ओवर इंडिया में तो और बाहर के भी इंटरनेशनल लेवल के सब लोग रहते हैं और काफी अच्छा मतलब इम्प्रेशन कह लीजिए सर कह लीजिए और जेपी अग्रवाल सर और आप खेतान सर सब लोग जो है बहुत अच्छा लेक्चर दे रहे हैं बहुत ही बढ़िया मतलब क्या बोले अब Thank you, madam. Thank you. I was talking about the 7 wonders of the non-living wonders of the wonder things. It is really surprising to see a senior student of OSPAS or a professor at Bangalore airport. I am just in front of luggage collection trolley bag center, and she is along with me. It is my pleasure that I met her, and I'm also fortunate that you have a curiosity about your subjects. Therefore, now I have to work hard. Now I have to make it more simpler. Although Professor Ramkumar Sharma helped me lots, Dr. J.P. Agarwal motivates me lots. In spite of that, we have to improve it further. Let us continue our topic. A spinal cord contained in the epidural space. You guys know the dura in the brain continued till the coccyx, till the I will tell the difference between chorda equina and conus medullaris. It is contained in epidural space, network of sensory and motor nerves. It is a dual connection. It is formed cord-like structure. Extend from foramen magnum to L1, terminates at conus medullari, chorda equina. Chorda equina, we called it like it is a tail of a horse. The name originates from chorda equina, begins below L1, phylum terminate, extend from conus medullaris to coccyx. फाइलम टर्मिनल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे कॉर्ड समाप्त होती है उसको हम बोलते हैं कोनस मेडुलरिस मेडुलरिस का मतलब मेडुला और कोनस का मतलब कोन जैसा बना मेडुला से जो स्ट्रक्चर खत्म हुआ उसको हम बोले कोनस मेडुलरिस जहां पे स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो जाती है उसके बाद जो ड्यूरा होती है वो नीचे तक एक्सटेंड करती है और जितने रूट्स हैं वो नीचे तक जाती है और रूट्स के गुच्छे को जब हम देखते हैं तो वो रूट्स का गुच्छा हमें पूंछ की तरह दिखाई देता है घोड़े के पूंछ की तरह therefore we called it chorda equina. So this structure it is a band like structure which extend from conus medullaris to coccyx. Sometime when we used to operate the spinal cord tumor below L1 it is very difficult to differentiate between a spinal cord and phylum terminal. There are two or three basic differences between a spinal cord and phylum terminal that I will tell you. In phylum terminal, we are not getting on the surface of phylum terminal, we are not getting any lash of or any type of thin vessels or network of vessels which is supplying it like in a spinal cord. And the texture of phylum terminal is different from the spinal cord. The color is slightly different from the spinal cord. There are 3 to 4 things which differentiate from phylum terminal to the spinal cord and make us easy to operate it. Next slide, please. Next, the earlier one. Don't go fast. It is a very important lecture, Ramkumar Sharma.
Next slide, please. You just see the spinal cord here, the picture. The cervical spinal cord, the thoracic spinal cord, the conus medullaris, as I told you, the cauda equina, the phylum terminal. Just see in the picture. Yes, he is showing with the arrow. Just start from the segment of the spinal cord, cervical, thoracic, the conus medullaris, the cauda equina. You have to differentiate most of the time we get confused between conus medullaris and cauda equina. The simpler thing you have to remember, conus medullaris mean the structure which start from medulla, and the cauda equina. Equina is a word which originates from the tail of the सर आपकी आवाज धीमे आ रही है काफी. थोड़ी इम्प्रूव हुई है सर. चलिए मैं और तेज बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. या वॉल्यूम बढ़ा दें सर मोबाइल का तो शायद बढ़ता है. वॉल्यूम फुल पे है अनिल जी. अभी आवाज आ रही है? नहीं आ रही? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, अभी भी कम ही है सर. no sound, no. What should I do? The volume is full. अब देखिए नहीं कैसे आवाज अब आ रही है? अभी भी सर कम है. जस्ट 1 मिनट पहले काफी बेहतर साउंड था सर, अभी कम है. अच्छा, हाँ. just see it. Is it improving? Maybe my mobile is not charged. Don't worry, I'm trying to improve it. Are you getting the pictures? सर अभी भी कम आ रही है. Anil ji, you have to just wait for another 5 to 7 minutes. My mobile is not charged. That is the only valid point. I think you are not getting the voice. Just wait for 5 to 2 minutes. Just wait. Anil ji, are you getting my voice? हाँ सर अभी भी आ तो रही लेकिन काफी धीमे आ रही है सर. थोड़ी देर रुक जाइए, मोबाइल को चार्ज हो जाने दीजिए अनिल जी, बस थोड़ी देर और रुक जाइए.
हाँ सर। तब तक आप लोग कुछ दूसरा 5-7 मिनट पढ़ा लीजिए, देख लीजिए, यू कैन यूटिलाइज योर टाइम। I am sorry for this type of interruption. It is not good for any lecture, but you can just continue for 5 to 10 हेलो minutes. हेलो जी अनिल जी, जी सर। तब तक आप ऐसा करिए कि क्वेरी सेशन जो है हमें जी स्टार्ट कर दिए, जी किसी के जो क्वेरीज हो। ठीक है सर। तो अभी चूंकि डॉक्टर खेतान साहब बेंगलोर एयरपोर्ट पे हैं और हम सबके लिए यह प्रसन्नता की बात है कि हम सभी को ज्ञान देने के लिए और जो भी अटमोस्ट एफर्ट होता है डॉक्टर खेतान साहब लेते हैं। तो वहाँ करीब 1 घंटे का समय था, तो कोशिश कर रहे थे कि यह क्लास ले पाएं, लेकिन नेटवर्क इशू या कोई प्रॉब्लम है टेक्निकल, जिसकी वजह से आवाज़ कम आ रही है। तो आदरणीय अग्रवाल सर हमारे बीच हैं और आप में से जो जिनका भी क्वेरी सेशन अभी स्टार्ट हो रहा है, जिनके भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हैंड रेज करें। खेतान साहब ने कहा 5 मिनट में जुड़ जाएंगे वो चार्ज करने के बाद, तब तक के लिए। जी, तो जब तक खेतान साहब कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तब तक क्वेरी सेशन स्टार्ट करते हैं। अनीता जैन जी अनम्यूट कर लीजिएगा और अपना सवाल पूछिएगा। हाँ, नमस्कार सर, मैं अनीता जैन बोल रही हूँ जयपुर से। मैं ये पूछ रही थी, चक्रा कितने लगा सकते हैं एक बार में? ये देखिए, टोटल पैर और हाथ में मिला के 6, एक तरफ 6 और 4 10 हैं, 4 टिश्यू के हैं, 20 हुए लेफ्ट राइट में, और हाथ में भी 20 हैं। आप लगाने की बात ये कर रहे हैं कि क्या चक्र के 8-10 चक्रों की जरूरत है क्या? अगर आप देख रहे हैं कि एक चक्र से सर 3 या 4 की तो जरूरत पड़ जाती है सर। हाँ, तो 3-4 में है क्या? 2-4 440 पॉइंट की जगह आपने 4 BM2 या 3 लगा दिए, दैट इज इनफ। सर इनकी जगह स्टार मैग्नेट लगा सकते हैं सर? हाँ, लगा सकते हैं। अच्छा सर, बस थैंक यू सर, थैंक यू, यही बस पूछना था सर। ओके, और इसके बाद अंजुली जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अंजुली। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। नमस्ते सर, मैं लखनऊ से बोल रही हूँ। हाँ, सर मेरे को एक दिक्कत आ रही है, आँख की तो दिक्कत थी ही, अब मेरे को नोज में एक दिक्कत आ रही है। मेरे ये जो नोज का ये वाला हिस्सा है, सामने वाला जो कार्टिलेज वाला हिस्सा है, बोन वाला नहीं, सामने वाला, इसमें अंदर पेन होता है, बहुत ज्यादा पेन होता है। नाक भी रेड हो जाती है, पर कहीं कोई दाना नहीं है, कहीं कोई रैश नहीं है, बिल्कुल भी। अंदर ही अंदर यहाँ पेन होता है इस जगह पे। और मेरे जो अंदर का तालू है, मुंह के अंदर जो होठ जहाँ ऊपर, वो टंग जहाँ ऊपर टच करती है, उस जगह की स्किन भी बहुत उतरती है। आप ऐसा कीजिए, स्किन डिजेनरेशन 2.5 जो पैर में है। हाँ बिल्कुल सर, आपने देख लिया होगा 2.5 में। बिल्कुल। इसमें आप सिंपल टोन करें, और आपको BM3 से या 2 से आपको फिर उसके बाद 1-2 दिन में फीडबैक दीजिए। सर टोन करूं या सीडेट करूं उसको? आप देखिए, टोन करके देखिए, अगर आपको किसी तरीके से अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देखिए मेरी नोज वाली दिक्कत बहुत सीवियर हो रही है, नोज हाँ की नहीं, जो वो प्रॉब्लम। मैं आपको यही कह रहा हूँ, इसको कीजिए। अच्छा। और दूसरा जो है, आंख और नाक कान के लिए आपको जो है लेफ्ट थंब में 7 और 7.5 एंड 8 7.5 एंड 8 हाँ 8 और 8.5। 8.5 ठीक। इसमें ऐसा है कि 7 और 7.5 पे आपको व्हाइट बॉल मैग्नेट यानी टोनिफिकेशन, और 8 और 8.5 में सेडेशन बाय BM2 ठीक है। BM2 और और नाक सर कान के लिए
आंख नाक कान के लिए, आंख नाक कान के लिए, और और इन अगर आप मैग्नियन में सुनिए इस पे इन साइड में है, हाँ इन साइड में स्टार मैग्नेट भी लगाएंगे तो बहुत अच्छा काम है। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। ओके, अनिल जीत जी। हाँ जी सर, हेलो जी सर, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। हेलो, हाँ आ रही है। हाँ जी सर, नमस्कार सर, अनिलजीत सिंह बोल रहा हूँ चंडीगढ़ से। हाँ बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि जैसे हम लोग PN3 को टोन करते हैं, अगर किसी का डायबिटिक को कोई पेशेंट है, तो अगर हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है, सॉरी सर, हाँ हेलो, PN3.5 PN3.5 को टोन करते हैं जी चक्रा मैग्नेट से सर। जी सर, तो अगर कोई हाइपोग्लाइसीमिया का पेशेंट है तो उसमें क्या करना चाहिए? क्या उसको सुबेड करना चाहिए सर? नहीं नहीं, केवल आप जो है क्लस्टर मैग्नेट लगाइए बस। PN3.5 पे? हाँ जी 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 सर, जी सर, ठीक है और सर, ठीक है अनिलजीत सिंह आप कैसे हैं? सर। हालात तो अभी ऐसे ही है सर, लेकिन ये है कि मेरी अब शुगर कम होनी स्टार्ट हो गई है, तो मैंने B12 के इंजेक्शन वगैरह लगवाने स्टार्ट किए हैं, तो उससे मेरी शुगर डाउन हो रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि चलो मैं PN3.5 पे उसको स्टार मैग्नेट या उसको सेडेट करके देखता हूँ। नहीं नहीं, देखना की जरूरत नहीं है, आप क्लस्टर मैग्नेट लगाइए PN3.5 पे सर। हाँ जी जी सर, ठीक है सर, धन्यवाद सर, ठीक है। हाँ, विवेक चौबे जी। सर नमस्ते, मैं ममता चौबे झारखंड से बोल रही हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर है मेरा। सर आज क्या हुआ ना, मेरा जो दाहिने वाली हाथ की थंब में कट गया है सर, नाखून के पास, वहाँ आती है गाल ब्लडर से बेल्ट, तो मैं क्या करूँ सर? फिटनेस का भी तो इंजेक्शन नहीं लगाई, तो कोई प्रोटोकॉल बता देते। नहीं, आवाज साफ नहीं आ रही। सर मैं, मेरा जो दाहिने हाथ के थंब है ना, वो उसमें कट गया है, तो खून काफी निकला हुआ है, तो मैं फिटनेस का सुई नहीं लगवाई, तो मैं सोच रही थी कि प्रोटोकॉल बता दे तो लगा लेती। नहीं दाहिने हाथ के अंगूठे में, आप नाखून के पास। कहाँ पे अनिल जी, आप समझ पा रहे हैं क्या बोल रही हैं मैम? समझ में नहीं आ पा रहा है सर। सर दाहिने अंगूठे में हाँ कट गया सर, नाखून के पास। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक, लिखिए। मतलब पोस्टीरियर पार्ट में कि एंटीरियर में? ये नाखून के पास सर, नाखून के अंदर। अच्छा ठीक है, लिखिए। राइट थंब 9th स्पाइरल 3/4 sedate 5/6 tone। 9 स्पाइरल सर 3/4 sedate 5/6 tone। 3/4 sedate और 5/6 tone। हाँ बस 4 पॉइंट लगाइए। जी सर। सरिता अग्रवाल जी। सर नमस्ते। नमस्कार सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, सरिता अग्रवाल। सर मुझे पूछना था, एक लड़की है 23 इयर्स की, वो जब धूप होती है, गर्मी बढ़ती है या धूप में बैठती है, तो उसको ब्रेस्ट में पपड़ी उतरने लग जाती है और देखने में अच्छा नहीं लग रहा। वो बोल रही है कि तो मुझे आंटी क्या उपचार चाहिए, मुझे पूछ रही थी। हाँ लिखिए। जी दाएं तरफ या बाएं तरफ? सर ये तो मैंने शायद सर बाईं तरफ है। मैंने जिधर भी हो गैस्ट्रो चक्र पे ग्रीन कलर लगा। ग्रीन कलर? जी जी जी, थैंक यू सर। हाँ, अनंत कुमार सरकार जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। हाँ हाँ, बोलिए अनंत जी। हाँ बोलिए अनंत जी, आपकी आवाज आएगी, अनम्यूट हो गए। अनंत जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तब तक दूसरे को, प्रीति जी अनम्यूट कर लीजिएगा। अश्विनी कुमार पाटिल जी। हाँ अश्विनी कुमार जी। हाँ जी सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्कार। हाँ मैं अश्विनी कुमार पति, ढेंकानाल उड़ीसा से।
सर जिसका बार बार पेशाब आता रहता है 20 बार दिन में, तो क्या करना पड़ेगा? चक्र 0.5 एंड 1.5 को सेडेशन। कौन सा चक्र? 0.5 CV3 को सेडेट कर दीजिए। CV3 यू नो? जी जी। बस उसे सेडेट कर दीजिए बॉल मैग्नेट्स या BM3 से। BM2 या और एक समस्या है जी। जी बोलिए। और एक पीठ में आघात होने से पूरा पीठ में पूरा दर्द होता है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पीठ में? जी, पीठ में आघात हुआ है इसलिए पेन है। चोट लग गई? चोट नहीं है, मैंने इसे मांसपेशी में कुछ समस्या है। नीचे किस एरिया में? अभी आपने सुना होगा कि 4 पूरा बीच में होगा। नहीं, थोरेसिक रीजन में। जी जी, थोरेसिक रीजन में है तो दोनों साइड, बाएं वो दाएं। जी both IF 6 vertical opposite 05 tone 68 sedate। 05 टोन 68 सीडेड। और सर मेरा एक प्रस्ताव है, जे मैं एक सेंटर एक्यूप्रेशर का अभी, जी सर, एक एक्यूप्रेशर का एक सेंटर लाया हूँ। जो पेशेंट बताते हैं कि कुछ समस्या है, तो हमारा जो मैंने हमें सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो हमारा दिमाग में नहीं आ जाता है, तो हम कैसे पूछ सकते हैं हमारा सीनियर को? इसके लिए कोई ग्रुप बना दीजिए सर, ठीक होगा हमारे लिए। अच्छा, हम ग्रुप लीडर्स बना देंगे, बात करेंगे। जी सर, जे हमारा कोई क्वेरी हो तो हमें तुरंत पूछ सकते हैं। जैसे नहीं, तुरंत नहीं, एक टाइमिंग फिक्स हो जाए, ऐसे तुरंत तो। जी सर, जी सर, आप जी अपना सर, नोट डाउन रखें। नेक्स्ट डे जो है, जी सर, आप देखिए सवेरे 10 से 12 जो है। अभय त्रिपाठी जी, मेरी बात सुन रहे हैं? हेलो अभय त्रिपाठी जी। हाँ अभय जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। नमस्कार सर। हेलो जी सर। हाँ अभय त्रिपाठी जी, अभी जी जो सर। डिमांड है इनकी बहुत अच्छी है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो अभ्यास करना चाहें तो उनकी हेल्प करने के लिए गाइड सुबह 10 से 12 बजे संडे को, मतलब एक दिन छोड़ के संडे को छोड़कर 10 से 12 हम आपको निवेदन पूर्वक ये गाइड नियुक्त करते हैं सेमेस्टर 1 और 2 के लिए। जी जी सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक जी सर, नमस्ते सर, थैंक यू सर। हाँ नमिता जी। नमस्ते सर। सर एक क्वेश्चन ये था कि जो प्रेगनेंसी के बाद पिगमेंटेशंस हो जाते हैं चेहरे पे और हाथों पे, तो उसके लिए हम स्किन डीजनरेशन का जो चक्र आपने बताया वो ले सकते हैं? हाँ, एडी मेरिडियन का। तो सर ये 1 पॉइंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं? हाँ ऐसा है, एडी मेरिडियन में अभी आपको हमने इसका भेजा नहीं है, और ये एडी मेरिडियन जो है आप फिलहाल जो है, मतलब इस पे एक एसके डीजनरेशन 2.5 पे एक स्टार मैग्नेट लगा। ओके सर। जी सर। और एडी का भी सर एडी का 2.5। जी सर। ओके सर, थैंक यू सर। इन दोनों में से जो भी पेनफुल होगा, हमारी फर्स्ट चॉइस जो है एडी 2.5। जी सर। इसको हम एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में कि वेयर, व्हाई, व्हेन वी शुड चूज स्किन डीजनरेशन, और कब हमें एडी मेरिडियन को चुनना चाहिए। जी सर। सर ये वो हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण
होता है तो आप इसको कीजिए फिर बताइए। जी सर जी। सर ये कितने टाइम देना पड़ता है सर, ये इसके लिए ट्रीटमेंट लंबा चलता है? नहीं, आप देखिए, कुछ दिन लगा के देखिए, इंस्टेंट ये सब चीजें स्ट्रांग हैं, लेकिन मतलब केवल क्या मैनिफेस्टेशन है, क्या सिम्टम आ रहे हैं चेहरे पे? सर वो काली काली झाइयां सी हो गई है और हाथ पे भी थोड़े काले काले झाइयां टाइप है, वो ब्लैक ब्लैक। नहीं, ईचिंग और बर्निंग वाला तो नहीं है? नहीं सर, बर्निंग वगैरह कुछ नहीं है, खुजली भी नहीं है। इसमें बेस्ट काम करेगा LU 10.5। इसकी लोकेशन हो रहा, हम लोग हमारी रिसर्च विंग आपको बहुत जल्दी अगले वीक तक पूरा बुद्ध की क्लास में दे देंगे। जिस तरीके से आप पैर का दिया है उसी तरह पूरे लेफ्ट राइट के 20 चक्रास का, जिसमें 8 टिश्यू होंगे और 6+6 रेगुलर मेरिडियंस होंगे। जी सर। तो सर अभी फिर फिलहाल सर एडी और स्किन वाला ही दें या? हाँ, नहीं, इसी में से एक दीजिए, क्योंकि ये सब कॉमन टू ऑल ऑर्गन्स है, वो स्पेसिफिक है। जी सर जी, थैंक यू सर। नमस्कार। सिवाय केसरवानी जी। नमस्ते सर, मैं पूजा केसरवानी बोल रही हूँ रुद्रपुर उत्तराखंड से। हाँ बोलिए। सर मेरे फेस पे सो के उठते हैं तो दाने नहीं रहते, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे फेस पे पूरे दाने निकल आते हैं और फिर पूरा फेस गर्म रहता है और शरीर ठंडा रहता है। तो मैं कौन सा यूज करूं सर पॉइंट? हाँ, इसको शरीर पूरा ठंडा रहता है सर, लेकिन फेस पूरा गर्म रहता है, बहुत तेज जलता रहता है एकदम से। ये जी सर। AD 2.5 एक हाँ। सर मेरा एक और क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। सर एक मेरे फूफा जी हैं, उनको कई हफ्तों से नींद नहीं आ रही, वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब से हो गए हैं, तो उनके लिए कौन सा पॉइंट आपने वो पैर वाला चक्रा बताया था सर? GB 41.5 को सेडेट कर दीजिए BM3 से। GB 145 नहीं 41.5, सॉरी, जिसको न्यूरो चक्रा के रूप में अभी हम दिखा रहे थे। जी सर, वही न्यूरो चक्रा। ये कितने दिनों से प्रॉब्लम है? सर उनका तो कई साल से, बीच बीच में दवा करते हैं तो ठीक हो जाता है, फिर कई दिन महीने बाद फिर वही हाल उनका हो जाता है, मतलब सोते नहीं, फिर पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं, गालियां वालियां देने लगते हैं, पूरा एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं वो। तो बोथ रिंग फिंगर के वाद जॉइंट पे ग्रीन कलर भी लगाइए। जी सर। बोथ रिंग फिंगर के वाद जॉइंट पे ग्रीन कलर भी लगाइए। ठीक है सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सुशील कुमार जी पूछिए। थैंक यू। सुशील कुमार जी। माधवी। हाँ माधवी। Namaste sir, this is Madhvi from Pune and I'm the second year student. So I have a question here regarding non-alcoholic fatty liver. So the person is doing yoga, exercise, everything, but still there is some slight swelling in the liver and the doctors are saying maybe it is because of non-alcoholic fatty liver. What are the symptoms? There are no symptoms. What are the problems and why the fatty grade 1 or 2 or 3? I think it is 1. 1. And what about the liver profile, blood test? Yeah, everything is normal. Looks like most of it is normal. Only sometimes the stool says, it's a little bit greenish in color. That's what she says. And when she eats some like vitamin C or something to do with the, like, some tamarind or कोई खट्टी चीज खाने से
then the stool color is kind of littleish brownish, but otherwise, if she doesn't eat any khatta cheese for say 4 or 5 days, then it is slightly, Liver 2.5 green color. liver 2.5. Okay. Metabolic chakra. Oh, it is metabolic chakra. So is it something to do with the gallbladder or bile? No, this is actually, it has a very, very strong and metabolic effect on the tissues itself. So no question of the gallbladder and liver itself. It will handle the vitamins, it will handle the minerals and all type of the infirmities and the degenerative processes and the tissue, connective tissue. Basically, you said this is metallic chakra. Metabolic, metallic means it should be very strong. The whole system of the body should be very strong. If there is some impairment in this metabolic chakra, the long run treatment, it is no just effect you can perceive like gastro chakra. Okay. Because this is partially neuro. Every chakra is connected with some neural plexus and ganglia and all that, or the branch of the vagus nerve, but more so. It has very good effect, and all the factors of the clotting factor है और तमाम तरीके के जितने फैक्टर्स हैं, और सबसे बड़ा इफेक्ट है कि डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स है, so that प्रोटीन का और आपके जितने मेटाबॉलिज्म है यहाँ से शुरू होता है, और PN 3.5 there is a connectivity. Okay. So do you have this information in any of your books which we can refer? Param Sukshma भी no? No, we don't. I don't think we have. हम second year के student हैं अभी. So no problem. That is a very fundamental, and it was published in way back to 2000. Okay. That is very comprehensive. इसमें पूरा physiology, anatomy, all these factors happen. Okay. Just ये book मंगाना पड़ेगा फिर. हाँ मंगा लीजिए. कहाँ पे हैं जो? पूना में. पूना में तो आप कर्नल पेंसे सर के यहाँ everything is available. अच्छा available. Okay. प्रतिमा जी everything is available. Sure. तो इनका diet वगैरह should we, is it to be worried or? No, not at all. But the diet should be the fat free and it should be simple, but need not to be panic. Oh, okay. नहीं, but वो ऐसे मोटे भी नहीं है, पतले हैं और कुछ फैटी चीज भी नहीं है. नहीं उससे कुछ नहीं होता. इनबिल्ट मैकेनिज्म है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और जब इंटॉक्सिफिकेशन, जब डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता तो लीवर खुद ही परेशान हो जाता है. Oh, okay. The only issue is that person takes less of water. So I'm thinking that is a big issue. No, this is big issue. Okay. That is a big issue, not less. Okay. The water in should, because the plasma and the blood, the entire tissue, connective tissue or the brain tissue, that should be nourished by under the different nomenclature. Water is important. हाँ, वो पानी थोड़ा कम पीते हैं वो, तो that is why, no, or that should be used as medicine. Medicine. Okay, got it, sir. Got it. Thank you, sir. Thank you so much. इसके बोलना तो सुभदा जी, सुभदा देशपांडे. हाँ, नमस्ते सर. हेलो. Meanwhile, अनिल जी, हाँ, नमस्ते सर. सबसे कांटेक्ट कीजिएगा. हाँ, खेतान साहब अभी जुड़े नहीं है सर. नहीं, उनसे फोन करके बात कर लीजिए. जी. हेलो, नमस्ते सर. हाँ, नमस्कार. हेलो. हाँ, नमस्कार. हाँ, नमस्ते सर. मैं शुभदा देशपांडे बोल रही हूँ.
सर मेरा हाथ का मसल में प्रॉब्लम है, उठा नहीं सकते हैं। अच्छा, हेलो। हाँ, दोनों हाथ का? दोनों हाथ का है, राइट हैंड का ज्यादा है। आप अपना दिखाइए जरा। सर ऐसा ऐसा उठाते ना तो इधर इधर प्रॉब्लम हो जाता है और ऐसा तकलीफ होती है उठाने में। कौन सा? हाँ, राइट, जरा उठा के दिखाइए। राइट। ये कितने दिनों से प्रॉब्लम है आपको? सर अभी दो वीक हो गए, 2 वीक्स। अच्छा, एनी इन्वेस्टिगेशंस हैज बीन मेड रिगार्डिंग? नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो ऐसा कुछ किया नहीं है। आप जो है हाँ फिंगर नंबर हाँ 1 and 4 was joint में थी, 1, 4, 5 was joint में थी, and twist it and press it. अगर आपको रिस्पांस ना मिले तो you contact us in help and health अच्छा program. 1 and 4 वातु जॉइंट मेथी पट्टी। हाँ, 1, 4, 5 1, 4, 5 1, 4, 5 ओके। press it and twist it. ओके ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। केतान साहब जुड़ गए हैं। ठीक। हाँ, तो डॉक्टर केतान साहब, once again welcome to him. जी सर, केतान साहब आपका स्वागत है। आवाज आ रही है? जी हाँ, आवाज आ रही है। राम, स्लाइड को बीच में करो राम। हेलो। You have सर स्क्रीन शो हो रही है। स्क्रीन मेरे स्क्रीन पे नहीं आ रही थोड़ी सी। अच्छा सर, आप लेफ्ट से राइट स्वाइप करेंगे स्क्रीन तो आपको दिखेगा सर। लेफ्ट से? हाँ, लेफ्ट से राइट स्क्रीन स्वाइप करेंगे तो सेगमेंटल लॉन्गिट्यूडनल ऑर्गेनाइजेशन दिखता है। The spinal cord, are you getting my point? Yes sir. Now we are going to discuss about the segmental and longitudinal organization of the spinal cord. The spinal cord is divided into 4 regions, different regions. I have told you, the cervical, thoracic, lumbar, and sacral region. The different cord regions can be visually distinguished from one another. 2 enlargement of the spinal cord can be visualized. It is very important. One enlargement in the cervical region from C3 to D2. Just see the picture of the spinal cord. You just see the cervical enlargement from C2 to D2, and other enlargement is here also. Cervical enlargement which extend from C3 to T2, and the lumbar enlargement which extend from L1 to S3. Next slide, please, Ram. Next slide. Surface of a spinal cord shows several longitudinal groups like deep anterior fissure,
shallow posterior median sulcus. No, previous slide, please. Don't change the slide. Lateral aspect, two sulci, anterolateral and posterolateral. From the lateral sulci, a series of root filament emerges anteriorly and posteriorly on each side. Several filaments from anterolateral and posterolateral sulcus unite to form ventral and dorsal roots respectively. As you know, there are two types of the ultimately roots, ventral roots and dorsal roots. The dorsal and ventral roots are paired and joined distal to dorsal root ganglion to form a spinal nerve, which exists from the canal through the intervertebral foramen. I am again repeating it. From lateral sulci, a series of root filaments emerge anteriorly and posteriorly on each side. Several filaments from anterolateral and posterolateral sulcus unite to form ventral and lateral root respectively. The dorsal and ventral roots are joined and distal to the dorsal ganglia form a spinal nerve which exists the canal and through the intervertebral foramen. Means it exits from the canal through the intervertebral foramen, and ventral and dorsal root get united, forming a dorsal root ganglion. Then it makes a spinal nerve. Next slide. A spinal nerve topography. Just see the diagram on your screen. I'm enlarging it. You find a little bit of difference between a spinal nerve and a spinal vertebra. There are 8 pairs of the spinal nerve. You just see it. 8 cervical nerve. Here the cord is segmentally organized. There are 31 segments defined by 31 pair of the nerves existing the cord. The nerves are divided into 8 cervical nerves, 12 thoracic nerves, 5 lumbar nerves, 5 sacral nerve, and 1 coccygeal nerve. Dorsal and ventral root enter and leave the vertebral column respect through the intervertebral foramen. As I have told you, just see the segmental organization of the spinal cord. I will tell you what is the segmental organization of the spinal cord. You just see there are C8, D12 or thoracic 12, then lumbar 5, and then coccygeal coccyx 1. This is the organization of the spinal cord. Next slide. Next slide, please. Now, developmental anatomy. During the initial early of the third month, embryonic development of the spinal cord extend entire length of the vertebral canal, and both grow at the about the same rate. As development continue, body and vertebral column continue to grow at much greater rate than the spinal cord proper. This results in displacement of the lower part of the spinal cord in relation to the vertebral column. Next slide. Next slide, Ram. Outcome of this uneven growth in the adult spinal cord extend to the level of the first or second lumbar vertebra, and nerve grow to exit through the same intervertebral foramen as they did during embryonic development. This growth of the nerve root occurring within the vertebral canal result in lumbar, sacral, coccygeal roots extending to their appropriate vertebral level. Next slide. Next slide, Ram. All spinal nerves except first exit below their correspondent vertebrae. In the cervical segment, there are several cervical vertebra. Mind it. Vertebra is 7, nerve is 8. C1 to C7 nerve exit above their vertebra, whereas C8 nerve exists below the C7 vertebra. It lives between C7 vertebra and the first thoracic vertebra. Therefore, each segmental nerve leaves the cord below the corresponding vertebra. Next slide. Therefore, the root filaments and root cord segment have to travel longer distance. Why? Therefore, the chorda equina is formed. It has to travel longer distance.
to reach the corresponding intervertebral foramen from which the spinal emerge. The lumbosacral roots are known as cauda equina. You see the cord level and vertebral level. There is a mismatch between cord level and neural and vertebral level. Therefore, we have to, if you are making the lesion with our clinical sign and symptom, we have to just correlate these things. Next slide. I think there are some more slides before it. The function of a spine is protection of a spinal cord and nerve root internal organ. Next slide. This is the degree of movement we are trying to. So the maximum degree of movement is flexion and extension, while lateral rotation is very, very minimal. You just can experiment on yourself how we can extend, bend, lateral rotation and rotation. What should be the degree of movement? And there are a specific muscle for all the type of the movement of a spinal cord. There are muscles, either it is flexion, extension, lateral rotation, or bending on either direction, or on a rotational movement. It has a certain movement at every joint. There is a maximum flexion and extension at D12 vertebra. Therefore, it usually it is called junctional point. Therefore, it is whenever you get trauma or osteoporotic collapse, there is a high chance of collapse or burst fracture or osteoporotic collapse at D12, because it is a junctional thing where flexion and extension is very high. And if we have to fix it, then we are usually fixing two level above and 2 level below. Usually we have to fix only 1 level above and 1 level below, but at junctional point we have to fix 2 level above and 2 level below, since the moment of rotation is very high at that region. Next slide, please. This is the sagittal. You know about you used to get a X-ray. And X-ray you are usually finding the loss of lordosis. What is the lordosis? Lordosis is the normal curvature of the spinal cord. Once you getting loss of the lordosis, by only visualizing the X-ray, you can appreciate there is a spasm of the muscle of a spinal cord, either in either direction. There may be a straightening of the spinal cord. To just see the lordosis, it is a normal lordosis of the spinal cord. It is about 20 to 40 degree in the cervical region, 20 to 40 degree same at the thoracic region, and lumbar lordosis is 30 to 50 degree. In lateral X-ray, you can easily appreciate the lordosis, and by visualizing only lordosis or loss of lordosis or increase the lordosis, you can clinically diagnose lots of diseases, lots of sign and symptom you can correlate with your finding. Next slide. It has already told you it is a region of a spine. You just know what is the line of gravity in body.
As you know, it is a butterfly shape. Have you ever seen butterfly? Butterfly has a life span of only 14 years. Can you imagine? A butterfly have butterfly has a life span of only 14 years, and it is a butterfly shape. A transverse section of the adult spinal cord shows white matter in the periphery, gray matter inside, as usually in the brain, and a tiny central canal filled with the CSF in the center. You get syrinx, dilatation of the central canal. Surrounding the canal, a single layer of cell we call ependymal cell. From astrocytoma, ependymoma tumor arises. Surrounding the ependymal layer is the gray matter, a region of the containing cell bodies, shaped like a letter H or butterfly. The two wings of the butterfly are connected across the midline by dorsal gray commissure and below the white commissure. Next slide. Shape and size of the gray matter varies according to the spinal cord. At the lower level, ratio between gray matter and white matter is greater than in higher level, mainly because lower level contain less ascending and descending nerve fibers. Just see it. Therefore, the shape of the butterflies, you just see the shape of the spinal cord. These are the different tracts of the spinal cord. There are some sensory tracts. You just see, there are some sensory tract, some motor tract, corticospinal tract. This is the posterior horn, anterior horn of the spinal cord, lateral horn of the spinal cord. Just see the structure in the white matter. Anterior commissure, anterior gray commissure. This is the central canal. This is the posterior white column. This is the lateral white column. See the anterior white column. How advanced the network of wires in our body, which is connecting our brain with the body. Just see. From dorsal root, just see the somatic sensory, visceral sensory. These are the tracts. These are the ventral roots. Next slide. The white matter, which consists of longitudinal bundle of nerve fiber, is divided into 3 columns on each side: anterior column, lateral column, and posterior column. The anterior column contains ascending and crossed fiber in the ventral spinothalamic tract, along with the descending fiber in the olivospinal, vestibulospinal, tectospinal, and ventrocorticospinal tracts. Next slide. Lateral column contains major descending motor pathway. As you know, the corticospinal fiber. Via the smaller descending rubrospinal tract, the ascending and crossed spinothalamic tract. In lateral corticospinal tract, the descending motor neuron destinated for cervical segment. In posterior column, fibers from the lower limb lie more medial than those in the ascending from the upper limb. Next slide, please. That I have already shown you. Where is the gray matter? You just see other way of seeing the spinal cord. It is a more live picture of the spinal cord. Just see the central canal through which the CSF travel down from all the ventricles to central canal. You just see the posterior commissure, the dura mater, the arachnoid, the central canal, as I have told you, anterior gray commissure, the pia mater, the anterior median fissure, the ventral root,
the posterior gray horn, lateral horn, dorsal root, anterior gray horn, and dorsal root ganglion. Next slide. Just see how beautiful our just see, this is the beautiful picture. It is like a wire. We are just cutting wire on the top. Just see. Where is the white matter? This is the central canal. Cerebrospinal fluid fills this central canal and provide nourishment to the nerve cell. A lining of ependymal cell is there. These are the sensations carried by the sensory roots. This converts to form sensory root at the back of the spinal cord. Impulses are then conveyed to the brain via the nerve fiber tract. Sensory root ganglion. Each spinal nerve has a dorsal sensory root ganglion, which is cluster of nerve cell bodies. And finally, it makes a spinal nerve. Motor nerve root, bundles of, just see the motor nerve root. So the sensory and spinal nerve both get together and form the spinal nerve. Just see, layer by layer, we are showing from outside to inward. Outside, that is dura mater, then arachnoid, then pia mater, and then the part of the spinal cord. This is the meningeal lining of the spinal cord. So this is the beautiful picture. You just, I am enumerating outside to inside, बाहर से अंदर की तरफ जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं. सबसे बाहर ड्यूरा मैटर है स्पाइनल कॉर्ड के. जैसे आप देखते हैं कोई तार होता है, तार के बाहर कई खोल होते हैं, कई दो खोल के होते हैं, कोई 3 खोल के होते हैं. इसी तरह हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो अंदर का तार होता है, उसके सबसे बाहर हमारा होता है ड्यूरा मैटर. ड्यूरा मैटर के बाद अराक्नोइड होता है. पाया मैटर चिपका हुआ होता है. उसके बाद शुरू होती है आपका व्हाइट फाइबर्स एंड ग्रे फाइबर्स. जो ग्लाइल टिश्यू होते हैं वो होते हैं. नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड राम. Posterior column. As they don't cross at the entry point in the spinal cord, the fibers from the lower limb are pressed more medially near the central canal. You just mind it. You just visualize where is the central canal. Posterior column means sensory, where the sensory fiber lies. As they don't cross at the entry point in the spinal cord segment, the fiber from the lower limbs are placed more medially near the central canal. The fiber from the upper limb are placed more distally. Medial to lateral at cervical level, sacral, medial to lateral, sacral, lumbar, thoracic, and cervical respectively. Central canal to dorsum, anterior to posterior. Just see it. The touch sensation, position, movement, vibration, and pressure. You used to give pressure on the fingers. You used to touch. You used to apply magnets, colors. Everything makes difference in the receptors. From receptor, the nerve impulses carry on and it carry to the spinal cord. Where it carries to the spinal cord, in which way, just see it. And therefore in Syringomyelia, what happened in Syringomyelia? The diameter of the central canal is increased. Size of the central canal is increased. The ependymal cell first get destroyed and gradually the fibers get destroyed. Therefore, you lost the sensation of hot and cold. You get burned while you are doing any hot work near the hot places, or while cooking. You lost the sensation of vibration. You lost the sensation of position sensation. You lost. You have a cotton wood-like sensation while walking. So this is the effect. If the central canal get widened, then the posterior column fiber get destroyed. And how it is destroyed, as I have told you. Lateral column
and anterior column, corticospinal tract, spinothalamic tract. As the fiber crosses the spinal cord, lower limb fiber are placed more laterally. The upper limb fiber are placed more medially at the cervical level, medial to lateral, each cervical, thoracic, lumbar, and sacral. Next slide. Corticospinal tract as a spinothalamic tract. As the fiber crosses in the spinal cord, the lower limb fiber are placed more laterally. Upper limb fibers are placed more medially at the cervical level, medial to lateral each. Just see the descending tract and ascending tract. The descending tract carry motor fiber, the ascending tract carry sensory fiber. Just see it. Next slide. Next slide, Ram. As I have told you, as I have taught you during the teaching of cranial nerve, there are various nerves, nuclei. Like we have discussed 4 nuclei of the vagus nerve. Similarly, there are the prominent nuclear group in the cell column within the spinal cord. From dorsal to ventral are marginal zone, substantia gelatinosa, nucleus propiosus, dorsal nucleus of Clark, interomediolateral nucleus, and lower motor neuron nuclei. Next slide. These are the different nuclei in the spinal cord. A butterfly shaped spinal cord. Just see the 2 horns, and in between the 2 horns, there center is this central canal. I have told about what happened when central canal get dilated. Now see the various nuclei, as I have told you. Just see where the substantia gelatinosa, nucleus propiosus, where is the dorsal nucleus, intromediolateral nucleus, intromedio-dorsal nucleus, posterolateral nucleus, and anterolateral nucleus. Next slide, please. The distribution of cell and fibers within the gray matter of the spinal cord exists a pattern of lamination. The cellular pattern of each lamina composed of various sizes and shape of neuron, cytoarchitects, which led Rex to the purpose a new classification based on the 10 layers. I think you don't have to go in detail of 10 layers. Next slide. Next slide. This is the meninges. I have told you. Within the spinal cord surrounded by the epidural space filled by the fatty tissue, vein, and artery. The fatty tissue acts as a shock absorber. A spinal cord is covered by meninges, which has 3 layers, like brain. Next slide. Just see it. This is the butterfly in the center, and the most outside structure is dura mater, then arachnoid, then pia mater. This is the body, this is the dorsal root ganglion. Just see it. Next slide, please. This is the another diagram in which we have told about the where is the central canal, where is the sensory root, dorsal root, how it makes a dorsal root ganglion, and then how it makes a spinal nerve. There are 31 pairs of the spinal nerve, and this is the place in the
our body, vertebral column, just see, it is covered by a bony cage. Are you appreciating bony cage? This is the vertebral body. Posteriorly, there is the lamina. Just see this is the posterior and this is the anterior, and it is a bony cage. In bony cage and a spinal cord, there is a fatty tissue, which acts as which called is epidural tissue. It acts as a shock absorbing tissue. Then there is a dura mater, then there is arachnoid, then pia mater, then white matter of the spinal cord, then gray matter of the spinal cord, then the central canal. Please get familiar with this photograph. This is the single most photograph which you have to just stored in your mind, in your occipital lobe. Just see. This is the another way to just make your understanding in a simpler way. Just see, this is the covering. Again, there is covering of the arachnoid matter. This is the covering of dura matter. जैसे आप कमीज पहनते हैं, कमीज के अंदर बनियान पहनते हैं आप, फिर हमारा बॉडी होता है, वही चीज है. सबसे पहले हमने कोई शर्ट पहनी या टी शर्ट पहना, दिस इज ड्यूरा मैटर. देन हमारी बनियान या गंजी हुई, दिस इज द वेरी थिन स्ट्रक्चर, वेरी थिन. यू कैन विजुअलाइज इट इज लाइक अ कर्टन, थिन कर्टन. एंड देन पाया मैटर जो होता है वो ब्रेन टिश्यू के साथ इंटरमिंगल्ड होता है. And this is the artery and vein on the surface of the spinal cord. This is the beautiful diagram. Just see the spinal cord. Again, I am telling you, it is started from the foramen of magnum and inside the level of L1 and L2, which called conus medullaris. And it has three covering: dura mater, arachnoid matter, and pia mater. Just see dura mater, arachnoid matter, and pia mater. Just see the posterior rootlets. Just see how the spinal nerve mates. Just see what is the dorsal root ganglion, what is the rootlets. It is the single diagram that can make clear all your doubts about the spinal cord. Just see the gray matter, the white matter, the central canal, everything is depicted in this diagram. Just see how beautiful the artery and veins supplying the spinal cord. Next slide. Blood supply of the spinal cord. Every organ is supplied in either way. Every organ. Brain is supplied by the three arteries, as you know. Anterior cerebral artery, middle cerebral artery, posterior cerebral artery, basilar artery. Vertebral artery unite to form a basilar artery, then it divides into posterior cerebral artery. Similarly, the spinal cord is supplied by anterior spinal artery, posterior spinal artery, segmental arteries, and feeder arteries. Next slide. The two posterior cerebral artery, each divided from the corresponding vertebral and posterior inferior cerebral artery. These two vessels traverse the length of the spinal cord, lying just the front of and just behind the dorsal nerve root. There is a single anterior spinal artery. Mind it. आगे की तरफ से सिर्फ एक ही anterior spinal artery होती है, जबकि पीछे दो होता है. The length of the spinal cord, lying just in front, there is a single anterior spinal artery formed by the union of a branch from the vertebral artery, which descend through the length of the spinal cord in the anterior median fissure. The arterial blood to the spinal cord in the upper cervical region is derived from two branches of the vertebral artery, anterior spinal artery and posterior spinal artery. These travel in the subarachnoid space, mind it, and send branches in the spinal cord. Spinal cord are reinforced by the each intervertebral foramen by the segmental artery, derived from the vertebrocostal
trunk, intercostal and lumbar artery. That dual supply of the spinal cord. This is the diagram which I have from the brain to spinal cord. Just see it. The two vertebral arteries unite to form basilar artery, and this is the artery. Just see how beautifully it is supplied. The anterior and posterior aspect. The posteriorly there are two arteries. Anterior there is a single artery. Posterior there are one branch of the vertebral artery, while anteriorly there are branches of the entire spinal artery. This is the branch of the cerebellar artery. Just see. Apart from the artery coming from the whole length as the spinal cord, since upward to downward. Apart from it, it is also getting a segmental supply at each level from costothoracic trunk and other part of also supplied the spinal cord. Sometimes we got a venous malformation, arterial malformation. If you visualize the picture of the anterior and posterior spinal cord, we used to get venous malformation. We used to get AV malformation, arteriovenous malformation, or we used to get arterial malformation, in which there are the huge network of arteries which also compressing the spinal cord. At a spinal cord region below the upper cervical level, anterior and posterior artery narrow from an anastomotic network with the reticular artery. The posterior spinal artery are paired and anastomotic chain over the posterior aspect of the spinal cord and plexus of the small arteries. The artery vasocorona means vasocorona, the surface of the cord. One artery is called artery vasa vasorum. We supply the artery also. Cord constituent the anastomotic connection between the anterior and posterior cerebral artery. Arrangement provides uninterrupted blood supply along the entire length of the spinal cord. Artery of Adam-Quich. This artery of Adam-Quich, also arteria reticular magna, is the largest anterior segmental medullary artery. The artery is named after Albert Adam-Quich. It is typically arises from the left posterior intercostal artery, which branches from the aorta at the level of T9 to L2, supplies the lumbar enlargement, known as greater reticular artery, major arterial segmental medullary artery, and artery of lumbar enlargement. There are lots of MCQ while when you are passing your MBBS examination and appearing in PG or post MCH examination. There are lots of MCQ on artery of Adam-Quich. Applied anatomy. Anterior spinal artery syndrome. As you know, anterior spinal artery is a single artery. The primary blood supply to the anterior portion of the spinal cord is interrupted, causing ischemia or infarction of the spinal cord in the anterior 2/3 of the spinal cord and medulla oblongata. It is characterized by loss of motor function below the level of injury, loss of sensation carried by the anterior column of the spinal cord, pain and temperature. Loss of motor function with preservation of mind. It's a very beautiful thing, clinical thing. With preservation of position, vibration and touch sensation. It is supplied by the posterior column. Again, I am repeating. As I have told you, one anterior artery, two posterior artery, and while teaching you, I have told you the structure from outside to inside. There is a dura mater, there is a arachnoid, there is a pia mater, then is a white matter, there is lateral spinal tract, there is a posterior spinal tract, anterior spinal tract, central canal. So if anterior artery is get blocked, there is ischemic changes, there is an infarction in the anterior half of the body. All the motor function will be disrupted. But in spite of this, there is a preservation of position, vibration, and touch sensation.
pain and temperature sensation is lost. So you have to examine the patient very carefully to determine the lesion, where it is a lesion of anterior spinal artery or posterior spinal artery. Next slide. Posterior cord syndrome is caused by in syphilis. Nowadays we are not seeing the syphilis cases of syphilis. Syphilis was very prone to involve the posterior column, or SABE, subacute combined degeneration of the cord. It is also prone to involve posterior column. Posterior cord syndrome is condition caused by the lesion of the posterior portion of the spinal cord. It can be caused by interruption of the posterior spinal artery. Unlike anterior cord syndrome, it is very rare condition. Clinical presentation is loss of proprioception opposite to the anterior cervical artery. Vibration session, 2-point discrimination, and loss of light touch. You just see the diagram here. Posterior column. Next slide. Venous drainage. We have discussed about the arterial spinal veins derived from the spinal cord substance terminate in a plexus in a pia mater, where there are 6 tortuous, often plexiform longitudinal channel, one along the anterior median fissure. I have told about all the fissures. A second along the posterior median sulcus. 2 situated on the either side. Recording of this lecture is there on YouTube with beautiful slides. You can go with that. If you are getting any difficulty, I can take another lecture on the same topic. Second along the posterior median sulcus, 2 situated on the either side, 1 pair just behind the other, just in front of the ventral and dorsal nerve root. These 6 vessels communicate freely with one another and above pass into the corresponding vein of the medulla oblongata and drain into the intracranial venous sinuses. Venous drainage. Venous drainage, as I have told you, this is the continuation slide of the venous drainage. The posterior half of the cord is drained by the posterior medullary vein. An anterior medullary group has 1 lateral and 2 medial groups. This is the venous drainage. Just see how the venous drainage of a spinal cord done by the help of some major veins and ultimately where it drains. Just see. Next slide. One is a Batson Plexus. It is also a very very favorite topic or very favorite MCQ question of MBBS students. The azygous system is a large network of veins draining blood from the intestine and other abdominal organ back to the heart. The segmental vein drain into azygous vein located on the right side of the abdomen or into hemiazygous vein located on the left side. The azygous system also communicates with the valveless venous network known as Batson Plexus. When the vena cava is partially or totally occluded, Batson Plexus provides an alternate route for blood return to the heart. The vessel of the Batson Plexus may be referred as epidural vein. Mind it. This is the alternate way. Alternate way of everything is given in our body. You have seen, apart from anterior and posterior artery, there are segmental arteries at each level. In spite of interruption of the major blood circulation, the segmental arteries are there. Similarly, there is a Batson Plexus. Azygous system also communicate with a just see the previous slide. The azygous system also communicate with the valvulus venous network known as Batson Plexus.
When the vena cava is partially or totally occluded, Batson Plexus provide an alternative route for blood return to the heart. The vessel of the Batson Plexus referred as epidural veins. What is the significance of Batson Plexus? Because the azygous system, patient positioning is very important in the posterior lumbar spine surgery. Patient abdomen should always hang free without any abdominal pressure. An increase in the pressure will diminish the flow through the azygous vein and vena cava. This result in an increase in venous flow in the Batson Plexus with a corresponding increase of blood loss. We are practically experiencing this. We used to increase the height of abdomen. Patient is sitting on the prone position. पेशेंट पेट के बल लेटा होता है, हमें पीछे सर्जरी करनी होती है, तो हम 2 तकिया उसकी छाती पे रख देते हैं, 2 तकिया पेल्विस पे रख देते हैं, उसके एब्डोमेन को फ्री कर देते हैं, इसी बाटसन प्लेक्सस के ड्रेनेज के लिए. The valveless venous system, vertebral system of the vein communicates above the intracranial venous sinuses. Below the pelvic veins, portal vein, and the caval system of the veins are valveless and the blood can flow in them in either direction. Such flow are clinically important because they make possible a spread of tumor or infection. Anil ji, there are 111 slides. Hello, Anil ji. Sir. I don't have any problem. I have time today. So, sir, next time it is up to the students. Since a spinal cord is a very long topic. Yes, sir. And our teaching doesn't mean that we taught a lecture of 111 slides and the student grasps anything, hardly grasps anything. Sir, it will be better. It should be continued in the next. Okay. This. I don't have any problem. Till now, we have completed the embryonic development of the spinal cord, the anatomy of the spinal cord, the various sections of the spinal cord, the arterial supply of the spinal cord, venous drainage, the applied anatomy, the Batson Plexus, and the artery of Adam Quich. The tracts. Now, the physiological part of tracts. It is also very important topic. It will covered in next lecture. Now, I think you should start the question session if you have. हेलो अनिल जी. जी सर, यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि एक मिनट सर. प्रकाश केतान सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने रास्ते में होते हुए, एयरपोर्ट पे होते हुए, ये जज्बा और हिम्मत अगर किसी में मैंने देखा है तो वो आपने. अभी मैं स्टूडेंट्स की चैट बॉक्स में देख रहा था, वो इसे बहुत अच्छी तरह समझना चाह रहे हैं. जो आज तक का आपने किया है उसको नेक्स्ट उसमें थोड़ा सा 15 to 30 मिनट्स में समराइज करते हुए इसे फर्दर, क्योंकि फ्रॉम एक्यूथेरेपी दिस इज द मोस्ट important aspect, being connectivity to all the anterior organs. Unless until we tap some stagnation or the impulse is obstructed at any level, and it can be hazardous, as I have seen in so many cases that the tachycardia and bradycardia could be controlled by the cervical treatment, the different segmental level and dorsal. And it was a very simple that on both the small fingers, if we apply the methi and the upper and the medial joints, and it could do the same. And as well, the upper extremities
some frozen shoulder and all that. There are so many. So it is very important from all angles, and acutherapist, it is the most important. So it is my humble request that it could be summarized in the next session. For so far you have taken up, it should be summarized within 15 to 30 minutes so that it should be revised and we can understand, and we should go for the applied treatment. और ये आपका बहुत बहुत आभार, और इसमें 15-20 मिनट जो till 15 minutes क्वेरी सेशन अगर आप ले लेंगे तो बड़ी बात है। अनिल जी 15 मिनट्स, और क्योंकि सर अपने पर्सनल काम से या किसी खास इम्पोर्टेंट अपने वर्क से बेंगलोर में है, तो 15 मिनट शुड बी इस पे, वो उनसे 15 मिनट और लिया। क्वेरी सेशन सर, ये आपको 15 मिनट सूट करेगा फर्दर? हेलो डॉक्टर खेतान सर, हेलो सर, कनेक्टेड तो है? हेलो हेलो, उनसे फोन पे बात करके जैसा वो कहें सर उसको। हाँ सर, अभी बात कर ले रहे हैं। कंक्लूड कर दीजिए। हाँ, तो खेतान साहब कह रहे हैं सर 8 बजे तक कर लेते हैं। जी हेलो तो डॉक्टर साहब, वो अपने को म्यूट किए हुए हैं, आपने कह हाँ दिया कि नहीं? खेतान सर, आप म्यूटेड हैं, अनम्यूट कर लें तो आपकी आवाज आएगी। आवाज आ रही है मेरी? जी। तो आप लोगों में से जिसकी क्वेरी हो हैंड रेज करें, तो अभी हमारे पास 10-15 मिनट का समय है। डॉक्टर खेतान साहब स्क्वायर करेंगे, तो 8 बजे अपने सेशन क्लोज करेंगे। डॉक्टर साहब, आपने मेरा रिक्वेस्ट सुनी होगी। सर एक फोन आ गया था बीच में, मैं सुन नहीं पाया, जल्दी फोन आ गया था। नहीं, हमारी रिक्वेस्ट ये है कि अगली सेशन में जो अभी तक आपने टेकअप किया उसको 15 मिनट रिवाइज अवश्य जरूर कीजिएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, द नेटवर्क ऑफ द आर्टरीज, और पूरा का पूरा जो आपने बताया है। हेलो जी हाँ डेफिनेटली सर, सिंथिया क्रिस्टी जी। करूंगा मैं। हाँ क्वेरी। गुड इवनिंग सर, मैं सिंथिया क्रिस्टी फ्रॉम पुणे। सर मेरे 2 क्वेरीज है। माय डॉटर शी इज 32 इयर्स ओल्ड। उसका जो सर्विकल है L1 L2 कुछ बहुत ही उसको पेन होता है, दबा हुआ पेन एंड जकड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करना है सर? एक्चुअली ये लॉकडाउन में घर से काम कर रहे हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ मैडम, that is the basically a problem of सर आई कांट हियर यू। you are not getting। आपकी आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा एक अनिल जी, आवाज आ रही है मेरी?
हाँ अभी आ रही है सर। मैडम ये प्रोफेशनल हजार्ड है बेसिकली, जो हम क्या वर्क सर? फ्रॉम होम करते हैं। इट इज नहीं, आवाज वापस गई सर। हाँ, वर्क फ्रॉम आवाज होम वापस धीमी हो गई। हाँ हाँ मैडम, आवाज आ रही है सर, लेकिन धीमे आ रही है आपकी, जैसे पहले बीच में धीमी आ रही है, बहुत धीमी आ रही है। अभी आवाज आ रही है मैडम? हाँ सर, अभी आ मैडम देखिए अच्छी आवाज आ रही है। देखिए प्रोफेशनल हजार्ड है, जो बच्चों को सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रही है, दिन भर कंप्यूटर पर बैठे बैठे वर्क फ्रॉम होम करते समय ये दिक्कतें आती है मैडम। तो इसके लिए ना एक्यूप्रेशर के पॉइंट बहुत ही उपयोगी हैं, बहुत ज्यादा। आप उस पॉइंट को सीखिए और उनको करिए, प्लस अपार्ट फ्रॉम दैट एक्सरसाइज करिए बीच बीच में, और लगातार मैंने आपको लैपटॉप पे काम नहीं करना है, आपको अपने पोस्चर को भी चेंज करना है, और पोस्चर को भी चेंज करते रहिए। कौन सा है? पॉइंट के लिए मैं पॉइंट का विशेषज्ञ नहीं हूँ मैडम, पॉइंट के लिए आप एक्यूप्रेशर के टीचर से बात करिए मैडम। ओके सर। कौन से टीचर सर? मैडम सभी लोग टीचर हैं इसमें। राम कुमार शर्मा, अनिल कुमार सिंह। हाँ सर, हाँ ठीक है सर। विवेक चौबे जी। सर मेरा और एक क्वेश्चन। हाँ मैडम मेरे सर नेप ऑफ द नेक। हेलो सर, नेप ऑफ द नेक टू द टोज मेरा फुल स्पाइन में प्रॉब्लम है सर, और जो रिब केज है ऐसा झगड़ा जैसा लगता है सर। मैडम बेसिकली यू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आई थिंक ऑस्टियोपोरोसिस। आप थायराइड भी एक बार चेक करा लीजिए, ऑस्टियोपोरोसिस कितनी है। थायराइड इज नो प्रॉब्लम सर। तो मैडम ऑस्टियोपोरोसिस आप चेक कराइए, प्लस आपका चूंकि पोस्चर ऐसा है कि उसका पोस्चर देख के लगता है कि जैसे आपकी शॉर्ट नेक है, तो आपको फिजियोथेरेपी भी अभी लिख रही हूँ करके बेंड किया है मैंने। आई सिट स्ट्रेट। नो प्रॉब्लम मैडम, just get some basic investigation and okay sir, get in touch with us. We will definitely guide you okay on sir, both platform, on allopathic platform and on acupressure platform, okay sir, to cure your illness. ठीक है, thank you very much sir. हाँ प्रीति जी, अनम्यूट कर लीजिएगा। सर मेरी एक फ्रेंड है, उसकी मतलब भाभी प्रेग्नेंट है, तो उन मतलब 2 दिन पहले जो है चेकअप करवाई है, तो उनका बच्चा ना मतलब वो उल्टा हो चुका है, तो सर वो कैसे ठीक होगा? अब मैडम उल्टा बच्चा सीधा तो होता नहीं है। तो सर ऐसा है ना कि मतलब कुछ हो तो मैडम हम लोग की ना जैसे 3-4 पोजीशन होती है जब भी बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं वर्टेक्स पोजीशन, या वर्टेक्स पोजीशन बोलते हैं, किफैलिक पोजीशन बोलते हैं। इस तरह के 3-4 पोजीशन होते हैं, तो वो आप गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए मैडम, दैट इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। अनिल जी और कोई किसी की क्वेरी? अनिल जी किसी को क्वेरी है और कोई? अनिल जी सर मैं ममता चौबे, मैं पूछना चाह रही थी सर्वाइकल से सर नर्व कहाँ जाती है, हाथों में जाती है कि कहाँ जाती है, मैं जानना चाह रही थी। मैडम सर्वाइकल से नर्व हर जगह जाती है मैडम, लंग्स में जाती है, जो जी सर, हाथों में जाती है मैडम ब्रेकियल प्लेक्सस के माध्यम से, फिर हमारे थोरेक्स में जाती है मैडम, नीचे पैर में जाती है, सब जगह जाती है। थैंक यू सर। One sound please. और कोई क्वेरी है? हेमंत जैन जी, हाँ पूछिएगा। हेमंत जैन।
हेमंत जी। हाँ सर, हाँ हाँ, हो गया वीडियो चालू करो। सर नमस्कार। सर नमस्कार। हेमंत जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारे लिए 4 साल से स्पाइन इंजरी है C4 C7 में, तो हम क्वाड्रिप्लेजिया हो गया था, दिल्ली में ऑपरेशन हुआ था, तब से हाथों में तो सेंस आ गया है सर, पर अभी हमको नीचे सेंस नहीं आया है। यूरिन कैथेटर भी डली हुई है, और तो हम सर ठीक हो सकते हैं सर? हाँ बिल्कुल आप ठीक हो सकते हैं, लेकिन आपका भी ना हम लोग स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करने के बने। मैं हेमंत कुमार सागर से हूँ सर, मध्य प्रदेश से। मैं बहुत दिन से आपसे बात करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर हो नहीं पाई सर। हेमंत जी ऐसा है, आवाज नहीं आ रही सर। आवाज नहीं आ रही। आवाज धीमी हो गई है सर। सर आवाज नहीं आ रही। हाँ हेमंत जी थोड़ा वेट करिएगा सर, जो है जी कुछ टेक्निकल इशू। थैंक यू, थैंक यू। केतान साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। आवाज आई हेमंत जी? आई सर, पास बताऊं। हेमंत जी ऐसा है जी, आपके स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, ट्रॉमेटिक स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। अब उसका एक ही उपचार है कि हम स्टेम सेल के द्वारा वैसे जी ही को रीग्रो करके वहां ट्रांसप्लांट करें। जी वो चीज अभी एक्सपेरिमेंटल है, और एक केस हम लोगों ने इजराइल में किया। अभी इजराइल में सर्वाइकल की हुई थी और वो क्वाड्रिप्लेजिक हो गया था, तो वैसे टिश्यू को हम लोगों ने क्लोन करके और स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया। जी तो हमारे जी सर। इंडिया में आते आते 5 साल लग जाएगा मुझे लगता है। आफ्टर 5 ईयर वी विल एबल टू मोबिलाइज यू। मेरी 62 ईयर एज हो चुकी है सर, तो और वैसे भी ये अब आने संभावना कम हो सकती है। 62 ईयर। अभी तो 38 साल बची है एज आपकी। सर थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। 38 ईयर बची है हेमंत जी अभी। सर मैं अपनी MRI वगैरह सर आपको भेज के सर और संपर्क कर सकता हूँ सर? हाँ भेजिएगा, कोई दिक्कत नहीं मुझे, मैं देख के आपको गाइड कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू बहुत बहुत, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। और कोई क्वेश्चन है लीजिए। हाँ रजनी त्रिपाठी जी। हाँ सर नमस्कार। हाँ रजनी जी बोलिए। हाँ सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि पेशेंट है एक, और वो डिप्रेशन का है शिकार, तो सर उसको न्यूरो को दिखाएं या साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं? हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज आ रही है। मैडम हम न्यूरो के डॉक्टर हैं, लेकिन हम साइकियाट्री के खूब मरीज देखते हैं। जी सर। जी आपके ऊपर, आप जिसको दिखाना हो मैडम। नहीं नहीं, आप सजेशन करिए, साइकियाट्रिस्ट को दिखाएं या न्यूरो को? सर वो बहुत परेशान है पेशेंट। मैडम आप मेरा ऑनलाइन नंबर लेके हमको दिखाइए ना, मैं देखूंगा। अच्छा, हाँ सर अपना नंबर बता दीजिए सर। मैडम राम कुमार शर्मा है ना प्रोफेसर हमारे, वो देंगे। अच्छा ठीक ओके सर। JPR के परमिशन के बिना ओके आई कांट शेयर इट। ठीक है, मैं मिंटू रोड की हूँ। संस्था से, हाँ मैडम संस्था से ले लीजिएगा नंबर। अच्छा ठीक सर। हरीश यादव जी। ओके। नमस्ते सर, मैं लखनऊ से हरीश यादव बोल रहा हूँ। हाँ हरीश बोलिए। हरीश सर ये लेफ्ट और राइट जो है कमर में जो है दर्द होती है। सर मेरी आवाज सुन रहे सर? हाँ सर, लेफ्ट और राइट कमर में दर्द होती है दोनों तरफ जो है, तो ये स्पाइनल से सर हो सकता है ये?
हाँ तो स्पाइनल से तो होता है, ये बीमारी स्पाइनल से तो होती है। सॉरी सर, आवाज थोड़ा स्लो आ रही है बहुत। हमारी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से ही जो नर्व, स्पाइनल नर्व निकलती है ना, वो जी कहीं ना जी कहीं सर, ये तभी ऐसी बीमारियां होती हैं। जी 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 जी, अनिल ठीक जी, सर, थैंक यू सर। अनिल जी। ठीक है, अच्छा केतान सर फिर कंक्लूड करें क्योंकि हाँ ऑलरेडी कंक्लूड 8 कर बज देंगे, चुके हैं। हाँ बिल्कुल कंक्लूड कर दें। जी एक क्वेश्चन पूछना, लास्ट छोटा सा क्वेश्चन था। हाँ राकेश जी। हाँ सर, एक छोटा सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है। आवाज मेरी आ रही सर आपको? आ रही आवाज? सर मेरी उम्र 59 ईयर है और मेरा कुछ प्रॉब्लम नहीं है स्पाइन वगैरह में, बट एक जनरली मतलब हम मल्टीविटामिन भी अब जैसे सर ने बताया हम स्टार्ट किए हैं, तो प्रिकॉशनरी मतलब स्पाइन को करने के लिए आप तो बहुत लोग बताते होंगे, तो कुछ क्या और करेंगे जिससे कि स्पाइन हमारा मेंटेन रहे? अपने पोस्चर पे ध्यान दीजिए, स्पाइन की एक्सरसाइज करिए बस। ओके, ठीक है ओके, थैंक यू सर। डॉक्टर प्रकाश केतान सर, आपने ट्रैवलिंग में भी इतना एफर्ट लिया इस क्लास के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा अग्रवाल सर कह रहे थे कि अगली क्लास में आज की जो इम्पोर्टेंट क्लास थी थोड़ा समराइज कर देंगे तो और सबके लिए यूजफुल रहेगा। पीपीटी काफी लंबी है तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट में आप लोग। या स्पाइनल नर्व पे जो क्लास है काफी इम्पोर्टेंट है, तो अगले बुधवार की क्लास या कंटिन्यू रहेगी। आप सब जुड़े आज की क्लास में, आप सबका धन्यवाद और नमस्कार। आज की लिंक बंद की जा रही है। थैंक यू सर। यस।